Welcome, guys. Welcome to another episode and another expiry live streaming session with ICICI Direct. As usual, we have Mr. Rajdeepak Singh with us. Welcome, Rajbhai, guys. hello. Welcome to episode in another expiry live streaming. Good afternoon, Gaurav. Yeah. Hello, viewers. We'll wait for 2 minutes. Let more people join in, and then we'll take the view of your on the expiry as usual. Rajbhai, meanwhile, can you share the screen? I think my screen is shared. Yes. Now I can see it. Yes. ओके सो राज भाई कहानी निफ्टी की थोड़ा मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस बार इफ यू डोंट माइंड थोड़ा अगर मैं दे दूं अपने एंड से हेलो राज भाई हाँ बोलो ना गौरव हाँ यस तो 2 दिन से वी आर सीइंग कि 400 और 500 के बीच में निफ्टी है निफ्टी इज होवरिंग बिटवीन 400 एंड 500 एंड अगर आप आज का भी डेटा देखोगे तो 19,400 पुट हैज approximately 6 crores of OI built up 5.73 to be precise right now and 450 and 500 at 4.5 each मतलब 4.48 and 4.37 each तो we are doing this session people expect us to give some buying call side pe, but given the situation right now, looks like a very range bound affair for me. What is your take, Rajbhai? देखो गौरव so far there isn't much direction move, but one thing is for sure that market participants are trying their best to hold Nifty, and if you look at sectoral also, then your IT is weak, FMCG is weak, and only your banking space is triggering or holding the market so far. Right. And if you look at the options data, then obviously 19400 put is having very substantial writing. So as of now, I don't see that market is moving below 19400. थोड़ा सा closer we had seen at 19450 call also. Yeah. तो अगर मेरा थोड़ा सा bias रहेगा, if I have to play directionally, then perhaps that is on the higher side. I Okay. would play for through call options, not through the put options for the day. Perfect. There are high chances that Nifty may settle around current levels only, that because your options premium are very low. If you look at 450 call input, then cumulative premium is 35 rupees only. Yeah. So, and buying put doesn't make sense to me. So in case covering comes, because in last 15 minutes there was some closure among call writers. So in case covering comes, then we perhaps move towards 19480, 490 odd levels, but not beyond that. I don't expect a huge directional move today. And in weekly expiries, large moves we haven't seen much. Only once or twice in last 2 months, there was some large direction move in the weekly settlement. जो भी आता है वो मंथली सेटलमेंट में आता है. वीकली सेटलमेंट में निफ्टी में particularly we haven't seen that sort of move. So as Rajbhai, of one now, second. Rajbhai, 1 second. Tanveer Rats, can you please stop spamming? We'll talk in Hindi, English, दोनों करेंगे हम. We both realize, we both know that we have viewers from Hindi belt as well as English belt who are comfortable in Hindi and English. We know what we have to do. Please do not spam the chat because I'll miss out a lot of question for people. Yeah, this is not the way. Please, guys, please stop spamming. Okay, the session would be conducted in Hindi and English both. And today whatever recommendation is given here, I will be updating it on the Telegram group as well. So in case you miss it here, please, you can look at our Telegram channel. The calls would be given there as well. Okay. Yes, Ankit, noted. That would be done from our end. Yeah, Rajbhai, please continue. So Gaurav, हाँ जैसा बोल रहा था कि we will see more of a range bound move today, and in case if I have to play, then I'll play for the short covering move. So अभी तो क्योंकि 450 के 450 कॉल स्ट्राइक इज आल्सो हैविंग, मतलब इसका वाई भी जस्ट 14 रुपीज का है, मतलब सॉरी प्राइस. तो ओटीएम 500 या 400 ऑप्शंस में जाना तो डजंट मेक सेंस. So if we have to buy, we'll buy this 450 call only, and we Okay. have already recommended the same in our monthly derivatives. Okay. तो राजभाई 450 कॉल ऑप्शन अभी चल रहा है. इट्स ट्रेडिंग बिटवीन 13.5 13.5 रुपए के आसपास है. सो इज दिस, क्योंकि यूजुअली आप जब 13 के आसपास 12 13 के आसपास का कॉल ऑप्शन बोलते हो तो इट यूजुअली इज अ जीरो हीरो थिंग.
So is this sort of that right now कि 12 बजे हैं but मैं 0 आपसे बहुत जल्दी ले रहा हूँ. हाँ, देखो गौरव, क्या है कि प्रीमियम तो है नहीं, बराबर. लेकिन इसको मैं जीरो हीरो की तरह नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी तो काफी टाइम बचा है मार्केट में. तो generally when your premium have declined so much, हाँ. okay, particularly for nifty, then there is a high chance that we may see some directional move in the second half or towards last 45 minutes of the trade. So Right. इसमें अगर we had given it with a proper stop loss, so if a stop loss gets triggered, then we will have a fresh view. But as of now, this is not a zero hero call. Okay. So Rajbhai, can you repeat the recommendation? I'll post it on the Telegram group as well. This is buy 450 call. Okay. Buy Nifty 19450 C. Buying range would be At CMP 14 and a half. between 13 and 14. I'll just post it. Hmm. Target 35 to 40. Okay. Stop loss. Stop loss 4 rupees. See, stop loss will get triggered only if Nifty moves below 410 sort of levels Yeah. before 130. So viewers, today I'll just post it in the chat as well. I'm just posting it on Telegram so that everyone can get this. Dinesh sir, meanwhile you're there. What is your view on Nifty? Good afternoon, everyone. My view is that 19,480 to 500 is very tough for today. इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, वो zone थोड़ा tough है. And in the lower time frame, that is in 15 minutes and all, I can see a kind of a rising wedge pattern being formed in Nifty, which is also suggesting that weakness on the downside that triggers below 19,415. So in my view, it is stuck between 415 on the downside. वहाँ सपोर्ट बहुत बड़ा दिख रहा है, and at the same time 480 looks like a big wall to me. Yeah. Okay. Okay. So I think both are on the same line, but Rajbhai says that नीचे की तरफ we won't be seeing a big move, because given the OI built up there of more approximately 6 CR share, I don't know how much it is, 5.73. We may see a move. We may see a small move towards 500. In that case, if that happens, 19,450 can turn into 30-35 rupees. That is what his hunch is. Okay, sir. Since Nifty is in the range and Bank Nifty, and it's the expiry for Nifty today. Bank Nifty doesn't have any expiry. So can we take the view of Bank Nifty as well? Can we just see what do we get in Bank Nifty? Can I show my screen? Yeah, sure. Rajbhai, can you stop sharing? Viewers, sure. we will post the Telegram link here. Don't worry. For now, our main focus is to get the view. The first trade which is live, जो पहला trade live है, that is 19,450 call, suggested between 13-14 for a target of 35 to 40. Stop loss is 4. We are on the Bank Nifty. We are taking view on Bank Nifty right now. Yeah. So Gaurav, this Bank Nifty, this massive double top breakdown which took place is now at the revisit zone of 43,900, 44,000. Okay, ये एक वॉल है, और आज के लिए मुझे वॉल दिख रहा है 43,975, 950 पर, बहुत बड़ा वॉल जैसा लग रहा है आज के लिए वो. और even going forward, if you go to the hourly, you'll get a much clearer picture. I'm going to make this into a line chart. Okay. Now look at this. Look at this zone. We are there now. Okay. So first attempt, second attempt, third attempt, fourth attempt में तू था. First time visit कर रहा है उस zone को. First time. So crossing of this zone, which is 43,870 to 43,950, ये जो zone है, it's not that easy. Okay, it can do a little bit time pass here. Normally जो देखा गया है, these zones give up with gap openings. It's during intraday, बहुत बार नहीं तो touch and go, consolidation, then breakout. Else with a gap.
does not give up so easily. So this is that wall which is also stopping Nifty from going up now because of its weightage out here. Yeah. So one should be very careful for a fresh point of view in this zone. Absolutely. Sunil sir, yeah, my mom was hospitalized, so I had missed the Saturday's session. Now she's back, and I'm also back. So yeah, all okay now. Okay. Rajbhai, Bank Nifty, your view? Gaurav, I totally agree with the Dinesh sir, and 44,000 levels are going to be a very, very strong hurdle. But somehow I feel like, see, as of now, your HDFC Bank hasn't performed. Yeah. Is still having that very high OI, short OI. If you look at HDFC Bank 1500 call strike, that is humongous open interest over there. और बाकी सारे बैंक्स को तो बात की बात है मतलब फॉर बैंक निफ्टी टू आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स और फर्दर आउट परफॉर्मेंस इन केस देयर इज एनी देन एचडीएफसी बैंक हैज टू परफॉर्म तो मैं 44,000 बैंक निफ्टी के बजाय एचडीएफसी बैंक को 1500 पे देखना ज्यादा पसंद करूंगा कि फील एचडीएफसी बैंक इज एबल टू सस्टेन 1500 levels then Yeah. perhaps this momentum might continue. And in that scenario, we might see Bank Nifty moving towards its higher band. जो सर ने जो चार्ट दिखाया है, अगर उसी चार्ट में ऊपर का लेवल अगर आप देखोगे ना, तो this current जो recovery है, that might extend towards those levels. Yeah, true. Yes, agree, Raj भाई. ये जो लेवल है, इसको अगर एक बार निकाल देता है 43,850 to 44,000, then तो नॉन स्टॉप मूव है 600-700 पॉइंट्स का एकदम. Perfect. That has to be triggered by HDFC Bank. Yeah, So yeah, as correct. of now, my entire focus, मतलब आपको याद होगा जब हम लोगों ने शुरू भी किया था ये एक्सपायरी देना, तो we were looking at HDFC Bank particularly. ठीक है, बट पिछले एक महीना पूरा एक महीना हो गया है स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 1500 करंटली आई थिंक 1490 ही चल रहा है ये तो एक बार 1500 के ऊपर क्लोजिंग आती है या फिर 1500 के ऊपर सस्टेन करना भी स्टार्ट कर देता है ना तो देन परहैप्स दिस मूव इन एचडीएफसी बैंक में एक्सटेंड टुवर्ड्स 1560 सो द सेम केस इज गोइंग टू हैपन विद बैंक निफ्टी फिलहाल एक इमीडिएट हर्डल आई एम एक्सपेक्टिंग एट 44,000 बट ओवरऑल अगर मैं मेजर हर्डल की बात करूंगा तो दैट वुड बी 44,700 44,800 एक बार अगर देखिए अभी ये एक डायगोनल बन रहा है वेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ये डायगोनल को अगर नेगेट करके ये ब्लैक लाइन के ऊपर चल जाता है ओके देन तो इट्स अ वो मैसेकर कर देगा शॉर्ट्स का और कॉल राइटर्स का 44,500 वुड बी लाइक अ फॉर्मेलिटी फॉर इट देन इट just opens up for this wall out here 45,000 वो एक फॉर्मेलिटी पुश अप पुश डाउन वैसे करेगा so it's a crucial wall right now for me for further upside इसमें उसको पूरा अभी वो या तो कंसोलिडेट करके री एनर्जाइज करना पड़ेगा अपने आप को you need some triggers like राज भाई said HDFC बैंक so because बाकी सब बैंक का अभी क्या रिजल्ट सीजन खत्म हो गए बैंक्स के so you need some other trigger to push it further now. Okay. Yeah. So viewers asking for Telegram channel link. Actually, even if I post the link here, I won't be able to. You won't be able to get the link. What you can do is go to Telegram, search ICICI Direct, ICICI Direct without a space. ICICI Direct आप डालिए. You will see a blue tick channel. The channel is an official channel. It is a what do you call blue tick channel. You can join it. Our total followers right now on the channel is 72,700. So you guys can get that. You can easily find out the ICICI channel there. Okay. People, I'll be taking some questions right now. Okay, फिलहाल के लिए we have only one trade running. That is 19,450 call option buy between 13 and 14 for a target of 35 and 40. That is the only trade we have right now. Okay. राज भाई कोई पूछ रहा था कि वोल्टास के ऊपर कॉल दिया है उसके व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट समवन हैड आस्क्ड आई जस्ट मिस्ड दैट चैट मीनवाइल आई it was an intraday recommendation which we have given in Voltas. We had given somewhere close to 824. Okay. Voltas future and currently it is trading around 829. Made the high of 83.40. So we are looking at booking profits over there.
Okay. It was more of an intraday recommendation. Okay. Okay. People asking about Shriram Finance. Actually, Shriram Finance wasn't a future pick. It was a normal recommendation given. And when it was given, I think that buy price never triggered that day. Uh, See, Gaurav, we had given Shriram Finance as an quant pick. There's Yeah. a equity recommendation, not Yeah. a derivatives recommendation. Guys, अगर कोई चीज हम लोग as a quant pick release करते हैं, and we do say that it's a cash recommendation, so please take it as in cash only, in equities only. रीजन बीइंग कि आप अगर उसका देखेंगे तो स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता है, टारगेट भी बड़ा रहता है. And secondly, why we had given that recommendation? So as of now, we believe that as Shriram Finance will be part of Nifty in the next rebalancing. So एक उसमें फंड्स की बाइंग आएगी. सो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट दिस इज मोर फ्रॉम द क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव. So what we believe that Shriram Finance is poised for further upside, but please don't take it in derivatives. Uh, Execute it in your cash segment Yeah. delivery. Yeah. So guys, whenever there is a quant pick, I hope you guys are clear that it is about equity, not futures. Okay. I'll just take a few questions. 19 is Nifty 19450C. It's not good idea to buy. Vishwanath sir, we'll see if it's a good idea or not. But we just trust our data and everything. So based on that, 19450 is the perfect pick. So yeah, that's it. Britannia 4700 call option. Rajbhai, your view on Britannia 4700 call option? Can you tell me the price? Just price पे इन्होंने लिया है? Yeah, can you just tell us the price, sir? We'll just get back there. $57. I think 57 is the price. Yeah, 57. Sir, hold it with a stop loss of 35, not more than that. Okay. क्या है कि आप अगर आज का पर्टिकुलरली आज आप देख रहे हो तो एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है. इफ इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड देन परहैप्स एंड आल्सो overall FMCG hasn't performed much in recent times. Even we have attempted to buy some FMCG names because overall market volatility may these stocks are tend to outperform considering their defensive nature. But as of now, they haven't performed. So just keep in a stop loss somewhere close to 35, and that's it. Please don't wait for it to become zero or hope recovery. So just avoid that. Okay, next. Okay, I'm getting Indian hotels was one thing which was being flashed. Rajbhai, you view on Indian hotels. Someone has PFC at 103. Ma'am, PFC though is more than double for you. So I think Rajbhai, आप ही बता दीजिए दोनों नहीं चीज. नहीं 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 पीएफसी नहीं बोलूंगा. ओके, ठीक है, समझ सकता हूँ मैं. या बट इंडियन होटल्स. रिगार्डिंग इंडियन होटल सर, इस अगर आप देखेंगे ना तो स्टॉक इज वन वे अप मूव फ्रॉम 370 टू 406 राइट नाउ. और इसमें लगातार 400 के कॉल में बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी, ओआई था, और 2 दिन में तो इसने वो लेवल भी निकाल दिया है. तो considering the momentum in the stock and the closure which we are witnessing, just keep in a stop loss of 398 and hold on to your positions. Okay. Okay. Maruti bought 10,400 call at 170. What would be the target? Gaurav, auto sector is trying to push its way back. Yeah. Auto. Today, We saw showing Ashok that. Leyland also doing well. Yeah, all of yesterday. them, Tata Yeah. Motor, Tata, all are trying to show the buzz.
Maruti is at a resistance now. 10,500 kind of is a resistance. Sustaining above that, it gets very strong. So it needs to sustain above that. 10,500 के ऊपर Okay. अच्छा मूव दे सकता है फिर उसके ऊपर. उसके पहले थोड़ा सा वो चाहिए, because you may, if you trying to enter now, the risk can be a bit deeper, around 10,250 Sir, odd. he has already One bought, I second, one believe, second, at 170. one second, Rajbhai, 1 second. I want you to see this interesting data. Last के 10 minute में, are you seeing any covering in 450 call option? हाँ गौरव. Can you see any covering there? Because I am seeing covering here, and I am seeing Nifty moving simultaneously up. There is covering. There is a marginal covering. I Marginal think, covering, yes. yeah, 8 lakh shares in 15 minutes time frame, and very minuscule in 5 minutes time frame. So yes, it has happened when after we had given recommendation, and Nifty has given up move. So Yeah. that time there might be some covering, but as of now, it's flat on a 15 minutes, 5 Yes. minutes basis. Yes. But we are seeing some activity there, some closure Yes. in, because मैं उससे Yeah. ज्यादा क्या इसको अच्छा सा अगर तुम देखोगे ना गौरव, हाँ, तो मेन चीज है कि क्या आपके पुट्स में एक्टिविटी बढ़ी है क्या. yes, वो भी मैं आ रहा तो था. हाँ, तो रिलेटिव बेसिस पे कॉल्स में क्लोजर ज्यादा है, बट पुट्स में भी बहुत मार्जिनल क्लोजर है. सो इट वुड बी वेरी अर्ली टू से कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है. बट फ्रॉम इफ यू कंपेयर द ऑप्शन प्राइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, then at that point of time your put prices are quite costlier compared to your call option prices. Now they are almost at par. Yeah. स्टिल 14 रुपीज 15 रुपीज का कॉल है, 20 रुपीज का पुट है, एटीएम स्ट्राइक 450 पे स्पॉट है. सो स्टिल पुट्स आर अ बिट कॉस्टलियर, बट अर्ली इन द मॉर्निंग द डिफरेंस वाज क्वाइट हाई. Yeah. सो दैट्स व्हाई वी हैव सीन दिस डाउन टिक. बट अगर ये हम लोग दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे हैं डे हाई का, और इसके ऊपर सस्टेन करते हैं 455 456 के ऊपर, then perhaps another round of up move towards 470 cannot be ruled out. Perfect. Perfect. Okay. So And viewers if you who have look at joined late, HDFC Bank, yeah, viewers who have joined late, just wanted to say that there's a trade recommendation given by Mr. Rajdeepak Singh. It is about buying 19,450 call between 13 and 14 rupees for a target of 35 and 40. The same call has been published on our Telegram channel, as well as Rajbhai. It is given on our yes, app yes. as well, on our Yes. recommendation page as well on the website, right? On the official website. So in नेहा जी का एक मैसेज है, आई एम uh, अनेबल टू सी वन क्लिक एफएनडो फॉर द लास्ट 1 hour. मैम, दिस इज वन क्लिक एफएनडो इन फ्रंट ऑफ मी, सो नहीं नहीं आई कैन हो सी. गया उन्होंने बोला it is okay now. She has refreshed the screen and she can see it. ओके. Okay. Yeah, Dinesh sir, you're saying something. Yeah, I was just looking at that 19,450 call chart. It's suggesting that a pullback till 22-25 possible from here. You know, if we just need a 15-minute close above 14 and a half. Right now, Okay. 15 है, so 12:30 candle close above 14 and a half could ideally take it to 22-25. And Okay. anything above 29 वो पागल कर देगा. So that is, I think that is Rajbhai's target of 35-40. Yeah. Okay. Yeah. Great. Great. Please suggest regarding BSE options. Vaishali ma'am, BSE option is not yet live on our platform. When once it's live, we'll let you know. The product team will help you out with that. So we would be waiting. When once the product team gives us a yes, we just definitely let you guys know. How frequent is this call session? This is Vinit Kumar, we already have a recommendation of call 19450 call. We have given a buy there between 13-14, so you can have a look there. Okay, and viewers, we will only be taking questions also for stocks which are in FNO, because this is the derivative team which is here. The cash call like Kothari Petro and other also have seen, we won't be able to take it. Okay, my option group is 20. How to reduce, sir, that I'll just get somebody on the line here from the product team that they will help you out. Okay. Dinesh sir, Yeah. Rajbhai, two frequent questions. Someone has bought
Apollo Tyre 420 call option at 13.2. What should be the SL? And persistent system 6250 at 153. Just tell me the Apollo one again, if you don't mind. 420 call at 13.2. 420 call. 420 call currently trading at 10.5. Yeah, 13.2 pe someone has bought. Yeah, so going to a higher time frame. Yeah. See, as long as it survives above 9, I'm okay with it. Okay, 9 can niche, it can sink quite low. Okay, and someone has persistent system 6250 call at 153. 6250. Yeah. Okay, 165. There's a load of resistance at between 170 to 180 in it. Quite a load of resistance. Good support at 150. Okay, 15 पॉइंट नीचे सपोर्ट सॉलिड है, ऊपर 15 पॉइंट ऊपर सॉलिड है, इन बिटवीन खड़ा है. सो बिलो 150 आई वुड बी वेरी केयरफुल विद इट. ओके ओके. येस बैंक के बारे में कुछ मार्क सर, येस बैंक के बारे में we will not be able to comment there because I don't think so we have a coverage on yes bank, so sorry sir for that. Or a one click is the square of there's approaching the target, or do we should you have to do it manually, Jai Mohan sir, you have to do it manually. So what you can do is you can just put a target there and it will easily square it off, so you have to do it manually. Balkrishna Industry, okay, Balkrishna Industry 2600 put option at 69, what should be the target? 2600 put. Yeah. I'm trying to do a breakout. See, first of all, it needs a 15-minute close above 70. Then can possibly do a move towards 90. Towards 90. That's the next big resistance. Above 15-minute close above 70. Next big resistance at 90 for that. And below 60, वो फिर पूरा pullback mode में घुस जाएगा. Below 60. Below not 60. Below 60 it will retest around 50. Right. Milind sir, I'm sorry, a lot of queries today, so if in case I skip it, so please do not, please say it again. I'm sorry. Bank Nifty recommendation, Mangesh, there's no recommendation of Bank Nifty right now. Okay. Bajaj Finance 7500 put option took at 175, CMP 198. Shall I hold or close? Which one? Again, sorry, which option? Bajaj 7500 put option. 7500 PE. Okay. 7500 PE on my screen. Resistance at 225. Okay, that's a big one. Uske upar can get very strong. That put. Support. Near support, I would say, is 175, but a stronger one at 160. A stronger one. That's the zone right now for it. Like I said, near 100 and yes, but above 225, ये बहुत strong हो जाता है. Above 225. Okay. And Ashok Leland 180 call option bought at 2.3 target. राज भाई, आप लेना चाहोगे ऑटो के बारे में कुछ? कि दिनेश सर ही ठीक है? अरे उनको लेना दो ना, चैंपियन है हमारे. दिनेश सर आप ही लीजिए. कौन सा वाला 180 call option, 180 call option. See, like I said, auto buzzing today, and we need a continuous follow through buzz. This one has resistance at 2.75. Right now trading at 225, 275 में एक है. उसके ऊपर सीधा 3.75. So 25 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस, उसके ऊपर सीधा ₹1 दिखा रहा है. और सपोर्ट की बात करूं तो माइंड यू, दिस इज अ 5000 लॉट साइज स्टॉक. सो
support 2.25. If that somehow fails to hold, okay, then straight at 1.75. Okay. Okay. Cool. Okay, there is an interesting question, sir. I want to take this because someone has sold 19400 call option at some. I just missed that. राज भाई किसी ने 19400 कॉल ऑप्शन बेचा है. प्राइस क्या है गौरव, उस पर बहुत डिपेंड करता है। प्राइस इफ 37-30 के बीच में बेचा है. देखो गौरव, क्या है कि अभी मैं थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ बैठा हुआ हूँ, फिर मैं अगर कॉल ऑप्शंस को उनका बोलूंगा तो दैट मींस माय बायस इज गेटिंग स्टक। या बट थोड़ा वेट कर सकते हैं वो, क्योंकि एक्सपायरी डे है, एक भी अगर ब्लिप नीचे आया तो इनके ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से कम होगा बिकॉज ऑफ द डेल्टा। बट सिर्फ 3 पॉइंट का प्रीमियम वो है इसमें। टीवी 45 चल रहा है, स्पॉट इज 41, और अबव सस्टेन्स अबव 55-60 ये पागल कर देगा। जो अपना 19450 कॉल जो आपका Absolutely. व्यू है उस तरीके से भाग जाएगा फिर ये। जी, क्योंकि अभी भी आई एम सीइंग निफ्टी वेंट डाउन टू 436, but still we are not seeing any fresh addition in 450 call writers. In fact, we are seeing reduction only. They went up by some 8 lakh shares, but they have again come down. And now Nifty has regained 19450. गौरव एक अच्छी बात बताता हूँ, तुम मतलब 19450 देख रहे हो, इवन 19500 कॉल में भी क्लोजर है थोड़ा सा। Exactly, exactly. And we are seeing Nifty regaining its 19450 spot levels. So तो it will be very interesting to see how it pans out. But right now we are not seeing fresh addition. अगर ये 465 के ऊपर अगर निफ्टी खड़ा हो गया तो this will be a massacre for call writers at 450 level for sure. see, Gaurav, So today Gaurav, everything, the negativity is coming through IT and Reliance. Yeah, So Reliance is down by 1%. That's why your Nifty is flat. Your banking are trying their best to hold the market. Uh, या तो SBFC बैंक जो है चलना चालू करे, स्टिल एट डेज हाई नियर, बट कुछ ज्यादा पुश चाहिए हमें SDFC बैंक से, और रिलायंस की में जो वीकनेस है खत्म हो जाए। hmm. तो बट ओवरऑल निगेटिव अभी भी नहीं लग रहा है मुझे मार्केट। दैट्स व्हाई फ्रॉम द बिगनिंग वी वर लाइक ओके, विल नॉट बाइंग पुट, either it will be range bound or we'll be looking for some upside towards 470 480। Gaurav, Interesting there is time. one, Yeah, if you can see my screen, आज yeah, सुबह से देखो साइज ऑफ द कैंडल्स इतने छोटे absolutely हैं, tiny. इतना Yeah, टाइनी है कि yeah, इट्स लाइक अ डल मार्केट। और मार्केट में एक सेइंग होता है, नेवर डू कॉन्ट्रा टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड इन अ डल मार्केट। तो वीव कम अप। सो इस समय वी आर अप्रोचिंग 1 o'clock, राइटिंग ऑप्शंस today. I have a gut feeling कि after 130 one side might get very badly hurt, because इतना ज्यादा स्क्वीज है फिलहाल कि एनी टाइम वो रप्चर कर देगा एक yeah. साइड एकदम। और प्लस वी हैड वेडनेसडे क्वाइट डे, ट्यूसडे क्वाइट डे, मंडे वाज शार्प। तो if you try to balance it, today could be one of those scary parts coming up. Yeah, Yeah. yeah. We can see that. 19550 put next expiry broad bot. Sunil sir, our experts are of the view that we are holding a positive view here, and since I think Rajbhai, you want to take that up? 19550 next week's expiry 150 पे लिया है. देखो सर, दे आर 5 expiries in a week now, and you are skipping mid cap nifty, nifty, then bank nifty, and then finally nifty. So see, I'm telling you my view. I'm expecting 19600 levels to be tested in nifty, then perhaps a pause or some pullback, but till then I am not having any negative bias. So या तो मेरा डेटा काफी चेंज हो जाए या फिर कुछ हो, एक दिन कुछ बड़ा हो तो ठीक है, बट गिवन माय करंट डेटा सेट आई एम नॉट नेगेटिव। So perhaps somewhere close to 19600 I'll again look at whether I should change my bias or not, but as of now, if you'll ask me as per current data sets, I'll strongly advise you not to buy puts. uh, you might get a better prices. Okay.
कल Hi गोदरेज sir, what's प्रॉपर्टी today's Vijay Mishra? There's no hero zero call. The call is buy 19,450 call option between 13-14, between 13 and 14. Target 35 to 40, stop loss 4. That is what the target is. Holding L&T Finance 150 call option 1.9 CMP is 1.7. It has given a Darvas breakout as well. Is it recommended to hold? Okay, okay. Dinesh sir, you want to take it? Rajbhai, you want to take it? Rajbhai को लेने दो, Rajbhai. Darvas and all is Yeah. not mine. Even Rajbhai is not, he is a derivative guy. Technical dikhti nahi Rajbhai. He is a data guy. Can you repeat the question again, please? Someone has bought 150 call option 1.9. Off? Off. L&T Finance, L&T. मैं बस एक इनपुट दूंगा सर, बाकी तो आप देख रहे हैं। सर अगर आप 7 से 8% दूर का कोई कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं ना, हाँ, तो शुरुआत वहीं से गलत हो जाती है। करेक्ट। मतलब अगर ये स्टॉक धीमे धीमे चलते हुए 148 भी आ गया तो भी आपके ऑप्शन में क्या पैसा बनेगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, स्टॉक हाई बीटा है, सारी चीजें हैं, अंडरस्टैंड, बट अगर आप एटीएम या जस्ट एटीएम ऑप्शन नहीं लेते हैं, इतना डीप ओटीएम ऑप्शन लेने का, अनटिल यू हैव ए न्यूज or you have some strong backing about why you have bought 150 call, please don't buy anything which is 7 to 8% OTM. And chart wise also इसमें 2 to 2.2 का रेजिस्टेंस लग रहा है बड़ा चार्ट में इस ऑप्शन स्ट्राइक पे। अभी चल रहा है 1.7 और मेल्टिंग फैक्टर अलग, and below 1.4 it will get bad, below 1.4. Asian Paints 31 call option added at 49. क्या रहेगा target? Okay, Asian Paints is a stock which I have been tracking quite regularly. Asian Paints में triangle trend line bounce back आया है. It's if you again I'll share my screen one second. I'll just try to explain it like that. थोड़ा easy होगा viewer के लिए. Okay, now see this line out here. Gaurav, my screen is visible, right? Yeah. So ये एक breakdown level था. You know, just picturize जो बैंक निफ्टी में हुआ, इसमें भी something similar. यहाँ first attempt, यहाँ second attempt, फिर breakdown हुआ. So this particular line out here, this level of 3150 is a kind of a wall. Okay, इतना easy 3150 breakout नहीं होगा. If it has to break out, it will do something like this, you know. यहाँ जाके थोड़ा time pass and then, or again, such kind of levels are broken with gaps. If you want to take it in one go, नहीं तो नहीं होता है. इतना जल्दी give up नहीं करते हैं ये levels. So that is a zone I will be a bit cautious about. Nifty going down. अरे कहाँ going down? 19,450, 13 to 14 के बीच में बोला था. It's near 11-12 now. It is not down, sir. SL for 19,415 CE is 4 rupees. It has not gone down, sir. इतना नीचे नहीं गया. It is near 11.7512. It's just 1-2 rupee down. Even if it goes down, we'll see. Sir, target for IDFC Bank taken a call at 83 call running at 2.6. Okay, before this, can we take GAIL 125 call option? Rajbhai, GAIL मुझे पता है आप track कर रहे हो recently. So what is your view on GAIL 125 call option? गौरव, गेल ने अच्छा मूव दिया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन कि ये थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद इट शुड मूव हायर वंस अगेन. सो स्टिल हैविंग अ पॉजिटिव बायस हियर इन गेल, और हो सकता है कि द वे स्टॉक इज पैनिंग आउट, द वे ओआई इज देयर, जो रिसेंट हाई है 132 की, ये स्टॉक उनको भी निकाल दे. नाउ द कंसर्न वुड बी कि क्या ये कॉल ऑप्शंस के थ्रू इसको खेलना चाहिए या फिर इक्विटी के थ्रू. तो I would say, sir, keep a stop loss of 122 spot because we are in options. So 122 के नीचे अगर ये गेल जा रहा है, then perhaps in this ongoing settlement we might not see stock moving moving above 127. फिर ये फंस जाएगा 126 पे ही.
सो आपके थीटा भी जाएगा और धीमे धीमे आपका लॉस हो बढ़ता जाएगा। तो जस्ट कीप एन स्टॉप लॉस ऑफ 122 एंड होल्ड, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट राइट नाउ, बट Okay. ओवरऑल स्टॉक इज वेरी पॉजिटिव। Okay. And Bajaj Finance future, someone has asked. And Bajaj Finance, we have a lot of queries on Bajaj Finance. So किसी ने future buy किया है and someone has bought 7600 call option of Bajaj Finance. We have a bit negative bias in Bajaj Finance and Bajaj Finserv. Even we have shorted Bajaj Finserv in our weekly derivatives. Yeah. So despite all the move what we have seen during the week, these stocks have remained underperformer. I know लोगों को मतलब view may differ, but एज ऑफ नाउ वी डोंट सी एनी ट्रेंड कि मुझे यहाँ पर मैं कवरिंग के लिए खेलूं या कुछ करूं। आप देखिए तो बाकी बैंक्स में तो थोड़ी बहुत रिकवरी आई भी है, बट बजाज फिंसर्व एंड बजाज फाइनेंस बोथ बजाज ट्विंस they have failed to perform. So for me, I will not be looking at buying these stocks only above 7650, or I would say 7700. I'll change my bias here. Okay. So I think anyone who's asking for Bajaj Finance, the answer is pretty clear. Okay. TCS 3400 call option bought at 46. सर कुछ नहीं होने वाला टीसीएस आईटी स्टॉक्स में, मतलब वी हैव मेड दिस ओपिनियन कि आईटी हैज बीन अ लैगार्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, इंटरमीडिएट ब्लिप आते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी दी स्टॉक्स परफॉर्मिंग, बट बिकॉज यू आर होल्डिंग इट आई कैन गिव यू स्टॉप लॉस ओनली 3400 कॉल, राइट? Yeah. किस प्राइस पे लिया इन्होंने? 47? 46. तो अभी लिया है सर, मतलब नॉट मच, इवन आपका थीटा भी नहीं गया है, तो आप 36 मतलब 37 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के रखिए सर। 10 रुपए का तो ऑप्शन में लगाना ही चाहिए ना, ऑप्शन उससे कम में होगा नहीं सर। Okay. Fin Nifty, sir, Fin Nifty will take later, Mohan sir. Sun Pharma long term, sir, long term name. We are trading here. This is purely trading show, so we'll not take any long term view. Sir, sorry for post again. Maybe you missed my question. Can you please give your input on Coal India? Sir, Coal India 820 call option नहीं हो सकता, sir. I think there is some different strike price I mentioned, because Coal India cannot be 820. Must be 320, and Yeah, probably. just like GAIL, Coal India, PFC, these PSC stocks are in a momentum. So they may spend some time, but trajectory remain positive. So until unless we see them moving down by 5 to 7% in a day, we should stick to our long position. So if you are holding 320 call, hold it and have a trail stop loss, I would say. Not Okay. fixed stop loss, but have a trail stop loss. Okay. Next is someone has bought 43,300 put option of Bank Nifty. I'll skip that as well. Sorry, sir, because I'm not taking Fin Nifty, so it won't be fair on that part. I'm holding 1480 put option of HDFC Bank. Should I hold or book? Rajbhai, you're tracking HDFC Bank very closely. So put लिया है 1480 का, and at this juncture I feel put option is not favorable risk to reward wise देखा जाए तो। देखो गौरव, अभी बात सारी की सारी व्यू पर आ जाती है यहाँ पर कि अगर मैं हाँ, पॉजिटिव हुआ हूँ लास्ट एक्सपायरी से, इफ यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने yes, और मेरा सारी रीजनिंग बैंकिंग और एचडीएफसी बैंक को लेकर है, right, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक हैज टर्न पॉजिटिव। मैं बार right, बार बोल रहा हूँ कि 1500 का कॉल बेस इज ह्यूज फॉर द स्टॉक, तो एक कवरिंग मूव तभी आएगा जब तक 1500 नहीं निकलेगा। right, सो टिल देन अगर मैं अपने व्यू के अगेंस्ट भी जाता हूं यहाँ पर, तो आप 1505 का एक स्टॉप लॉस रखिए सर, एंड दैट्स इट। अभी तो पिछले, क्योंकि 15 दिनों में स्टॉक में कुछ हुआ ही नहीं है, इट वाज इन रेंज ऑफ 1480 टू 1500, आई वुड से इन वन एंड हाफ वीक, तो इट वाज इन अ वेरी नैरो रेंज, एंड आप धीमे धीमे थीटा देते जा रहे हैं इसमें, बट ठीक है, अगर हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट्स का मूव लेने के बाद दोबारा नीचे आना चालू करता है, तो इन दैट सिनेरियो एचडीएफसी बैंक इज द वीकर कंपोनेंट एज ऑफ नाउ, नो डाउट अबाउट इट।
तो अगर इन्होंने 1480 का पुट लिया है, होल्ड इट सर विद स्टॉप लॉस ऑफ 1505. Raj bhai, okay, I want to take your attention on Nifty. 450 call option now has 4.73 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब 4.48 हुआ था, वहां से अब ये 4.73 हो गया, मतलब वी आर सीइंग 25 lakh addition एडिशन there, and now our call price has come 10 down to रुपीज. 10 rupees right now. Yes. और एक चीज और है गौरव, अगर तुम हाँ. पुट का वाई देखोगे और कॉल का वाई देखोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 times. Yes. So in case if I have to look out for the covering, see that's what I Yeah. said. In case if I have to look out at the covering, देखो 19,400 का तो आपने भी छोड़ दिया, 6 करोड़ शेयर है, हाँ. राइट? वो चीज हाँ. खत्म होती है, तो हाँ. कौन सा है जिसको एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि जहां पर थोड़ी बहुत कवरिंग आए? सो Right. दैट वाज 450 कॉल. Yeah. और इतना कम ऑप्शन है, प्रीमियम इतने कम है कि आपका मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे तब 12 से 13 रुपए था, अभी ये 10 रुपए है. तो ऑप्शन प्रीमियम भी नहीं है कि आप जो है इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर सके. Right. इवन अगर आप 19450 जो मार्केट नीचे आया है और सब कुछ हुआ है, तो भी अगर इसके डे लो से भी आप इसका देखेंगे तो भी ये मेरे ख्याल से 20 रुपए का 24 रुपए ही हुआ है. हाँ. तो देयर इजंट मच मूव इन द मार्केट. Yeah. आज का मार्केट बहुत ही लैकलस्टर हो चुका है, टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट. और ओके, देखिए बात करते करते ही मतलब अ, थोड़ा रिकवरी ले लिया निफ्टी स्पॉट ने. हाँ मतलब आपका पिछले 45 मिनट्स का हाई 455 है और लो जो है वो 437 है. हाँ. 20 15 पॉइंट से रेंज. भागा, या नॉट इवन 20 पॉइंट्स. या, चल लेट्स वेट एंड वॉच. आई थिंक आज का मार्केट वेट एंड वॉच लेट लेट मूव के लिए ही है. सो either it is on the upside or either it is at 450 which you had said. Let's see अभी हम इस पे कहाँ पे जाते हैं. I'll take few more questions. GMR Infra sir, GMR Infra 555 call option. 550. No, 55, 50. 55. Sir, GMR Infra 550 means 55. Okay. बहुत 55 is again an option which is too much of sideways movement happening. Resistance at 2.75. Okay, अब उसके ऊपर खुला आसमान है 2.75 के ऊपर. I would say 1.95 पर सपोर्ट है, बहुत थोड़ा नीचे है, बट उसके पहले कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जिसको मैं अपना ट्रेल मानूं. ओके, नियरेस्ट वन इज एट 2.15, but yeah, a safer one is around 1.9. yeah, yeah. Okay. Any fresh entry for intraday right now, Rajbhai? Can somebody take fresh entry in the call option 19450 wala? It is at 8 rupees right now. हाँ सेम चीज गौरव, मतलब Yeah, प्राइस नीचे आ जाएगा तो व्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. yeah, yeah. Actually, problem is the fair value now. The fair value of Nifty has come down to 428. Problem वहां होगी. You see, there's a huge difference between 450 call and put option. Call option is trading at 8 rupees, put option is trading at 29 rupees. Rajbhai, अभी you see the अचानक से skew there. मतलब there's a या skew 1:3 almost. 1:3, अचानक से 3. देखो बैंकिंग में दोबारा से वीकनेस आई है. और आईसीआईसी बैंक, Yes, सॉरी, एंड एचडीएफसी बैंक बोथ आर कमिंग डाउन. yes, And just we have discussed about the Bajaj Finance and Bajaj Finserv. So both these stocks are near the day's low. yes. There is a sell-off scene in, definitely a sell-off scene here in. Gaurav, it's less of a sell-off, it's more of decay factor हाँ, because yeah, put में भी premium hike spike नहीं हो रहा है अभी yeah, भी. Put is also 29 पर at 450 वाला. If this is cracking down, तो उसको ऊपर जाना चाहिए था for a decline. This is more of a decay factor playing now on 450 right now. okay. We'll wait for some more time. I am waiting here. Will Nifty trend line break? Sunil, which trend line? It's a lot of trend line. Sir, we cannot take questions on ICICI Bank, so sorry for that. United Spirits 1120 call option bought at 12 rupees. Rajbhai, any suggestion there?
यार गौरव, ये आज रिजल्ट को अपने वो कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है अगेन यार, सेम चीज की 10% अवे समवन हैज बॉट, स्टॉक वाज ट्रेडेड 1080, and if someone has bought 1200 call strike, so see there has to be something phenomenal, मतलब 1200 का कॉल कितने में बाई किया इन्होंने, क्या बोल रहा? 12 रुपए, 1120, 12 रुपए पे। अच्छा 1120, सॉरी आई हर्ड Yeah. 1200. See, overall, McDowell के बारे में हम लोगों ने last time, if I'm not wrong, we have spoken about it, and it's a good stock, and it should move towards 1130, 1140, and since he has bought at very good price, मतलब आज के डेलो को इन्होंने पकड़ा या कल इन्होंने लिया है, so I'll ask him to keep in stop loss from the intraday perspective. It has to be 16, but अगर पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें. So we don't know what. Okay, Concor 760 call option. Gaurav, I'll avoid that. कौन सा वाला गौरव? Concor 760. Okay. See again at a resistance 6.75 इसको निकालता है तो yes it can give you a move to 8 and bigger resistance at 9.5 and below 5.75 gone casing. बात करते करते निफ्टी रिक्लेमिंग 19415 स्पॉट लेवल्स. वही मैंने बोला ना कि वो पुट कॉल डिके टाइम के कारण हो रहा था. पुट का भी देखो डिके हो गया 2933 से सीधा 26, सीधा 26. तो Yes. उधर भी अब डिके आ गया प्ले में. Yes. Yeah. Viewers were asking any fresh view on 19450 call option. I'll repeat, 19450 call option is still a hold. We are not. We will be holding it with a stop loss which is given, that is 4 rupees. वो view intact है. The view is that Nifty will go up from here. अगर वो stop loss hit होता है तो वो hit होता है. If there's a hit, there's a hit. But our view is very clear. 19450 call option buy is still intact with the given stop loss of 4 rupees. That's it. Okay. Raj bhai, today we won't have Sumit with us. तो व्यूअर्स, हम लोग जो प्रोडक्ट का डेमो रखते हैं, वी कीप अ डेमो ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन 1 and 2. टुडे इट इज ओनली द डेरिवेटिव टीम, मी एंड दिनेश सर. सो राज भाई, in case you want to take your lunch break, we can take the lunch break. We can hold for, we can pause for some time. चलेगा गौरव. Yeah. So viewers, we will be back at 2 o'clock. Till then, the live stream would be on, and I'll be here. Our team will just take a lunch break and come back. So we'll see you guys in 1 hour, but the stream is on. Okay. Is this clear? Please put a thumbs up if you guys are okay with it. Okay. So yeah, Dinesh sir, Raj bhai, we can take the lunch break for an hour. The stream is on. Raj bhai, अपना screen share कर दीजिए बस आप 6 अपने grade I'm वाला. here, Gaurav, as of now. You're here? ठीक है. Yes, yes. तो I'll just come back in half an hour. चलेगा. तो You आप come back क्वेश्चंस ले after, लीजिए. Yeah. then I'll leave. Yeah. Yeah. Guys, I'll take questions one by one. देखता हूँ मैं, मतलब there is flurry of messages, so I may miss some. Target for Indian hotels. So जैसा भी थोड़ी देर पहले बोला ना कि इट्स इन द मोमेंटम, एंड जो एक इसका मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है जहां से इसमें ब्रेकडाउन आया था, दैट समवेयर क्लोज टू 450. सो दैट इज गोइंग टू बी द hurdle. So we will consider it as an immediate target or the hurdle area. Dhoni G 1 2 3 4, Nifty will go up or down from here.
सर एज ऑफ नाउ निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है. निफ्टी हैज बीन इन द रेंज ऑफ 15 10 to 15 पॉइंट्स, बट व्यू इज दैट it should move up. Titan 3400 call. Let me first share my screen, then we can discuss. टाइटन सर एक तरह से हर्डल एरिया पर है, बट स्टॉक वीक नहीं है. तो आई वुड से just have an stop loss. I don't know at what price we have bought, but 16 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के आप जो है अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं. Sir, JSW Infra is not an F&O stock, so I will not be able to comment on that. Sun Pharma 1180 CE. अगर सर आपने आज बाई किया है तो एक अलग बात है. अगर आपका ये पहले का बाई है तो होल्ड है, आज का बाई है तो होल्ड है. Pharma as an sector is showing tremendous strength, and I believe there are further upsides left. Sun Pharma, most likely we may see 1250 sort of level. So please just hold your position. I don't know the levels at what you have bought, so I cannot suggest any stop loss. कमल सिंह निफ्टी 450 के कॉल पे प्रीमियम नहीं मिलेगा. एवरीबॉडी अपने हिसाब से लॉस बुक कर लो. 1:45 के बाद ये जीरोस होना शुरू हो जाएगा. कमल सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इसमें मार्केट ऊपर नहीं जाता, मेरी कॉल गलत जाती है, तो फिर ये जीरो हो जाएगा सर. एंड आई नेवर सेड दैट मार्केट ऊपर जाएगा. आई एम जस्ट डूइंग माय डेटा एनालिसिस. प्रदीप जी सॉरी जो भी हैं, उन्होंने कमल सिंह शायद वो भी एक एनालिस्ट होंगे. तो विद फुल रिस्पेक्ट सर, आप भी सही हो सकते हैं आज. मैं कभी इसमें नहीं जाता. प्रदीप मेहरा, आपने बाई कर लिया. इज इट ओके सर? वी हैड गिवन द रिकमेंडेशन, यू हैव बॉट इट, यू कीप द स्टॉप लॉस. व्हाई डूइंग दिस? रवि जी पूरा लॉस हो गया है तो फिर प्लीज मतलब 9 रुपए का भी चल रहा है, आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं सर. मतलब वी had given a recommendation to act on that is something which you are supposed to do. Titan future buy or sell? Sir, that's what I said. Titan seems better. Weakness नहीं आई है स्टॉक में. थोड़ा सा हर्डल के पास है, इसलिए मैं हेजिटेंट था. बट ओवरऑल अभी मतलब अगर मैं इसको वैसे देखूंगा तो मेरे ख्याल से जब तक ये 30 to 20 के नीचे नहीं आ रहा, तब तक आई वोंट बी एबल टू से कि ओके स्टॉक इज वीक. And that is almost 3% away or 2.5% away from the current levels. So that's why if you haven't taken any position, then please don't take. I was giving my input to someone who has already bought. Having no view on something is also a view, sir. प्रदीप मेहरा जी, आप बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं. मतलब why do you want, why are you doing that? Shoaib ji, IDFC First Bank 85C at 1.35. शोएब जी, आपने लेवल अच्छा पकड़ा है, स्टॉक भी ठीक है. आई वुड से 1.35, लेकिन आपकी बाइंग ही है और आज का डे लो भी आपका जो है वो 1.35 है. सो इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस आई कैन नॉट go, but as of now it seems to be one should hold it. The target would be somewhere around 2.2, 2.3.
but your stop loss should be at your cost only. Just don't make any loss. Keep a stop loss at 1.35 and hold the positions. LNT FH 140 call. Yes, Priyanka ji, Priyanka ji, I know you have written it, but there are few guys who are spamming it. It would be a big stop loss for LNTFH. I'm not sure if I'm not wrong, you bought at 4.75, but for this stop loss should be 4. And considering high beta nature of the stock, I think that's the way you should look at it. और मैं एक आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जो है आपके पास 84 का है, आप अगर चाहें 88 का कॉल बेचना या फिर 87 का कॉल बेचना, तो वो करके आप थोड़ी सी अपनी कॉस्ट कम कर सकती हो। ₹1 से कॉस्ट कम कर देंगे, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ अगर आप 4 के स्टॉप लॉस से रख रहे हैं देन इट्स गुड। HCL, यस साईं जी, मैं देखता हूँ HCL भी। देखिए HCL बड़ी मुश्किल से 2000 के ऊपर आया है, बहुत मुश्किल से आया है, और इट वाज ए स्ट्रॉन्ग मूव। तो 1980 की जब तक, क्योंकि इसका इफ यू नो द नेचर ऑफ द स्टॉक, इट्स वेरी हाई बीटा, वन वे चलता है जब चलता है जिस डायरेक्शन में भी। सो जस्ट कीप एन स्टॉप लॉस ऑफ 1980 एंड होल्ड योर पोजीशंस, but I cannot go any higher than 1980. So I understand that it is almost 2%, 2.5%, or sorry, 3%, but uh, that's your वेदला रवि जी, मतलब दिस इज नॉट द वे वी शुड टॉक हियर, बट ठीक है। Vedula Ravi sir is, if I think we need to maintain the decorum here. Uh, this is not how you guys talk, because last week, Virajbhai, someone had spoken that I was absent for last Saturday's Dinesh's session. So someone wrote that how do you tolerate people like Gaurav in ICICI Securities? So viewers, please understand, if this is the way, if this continues, then we are more than happy not to do the session. Neha ji, there are some order placing related issues. We'll ask someone to get in touch with you. Gaurav, any idea? मतलब Regarding Rajbhai? there are some order placing doubts हैं नेहा जी को। Okay. I'll try to हाँ, get Sautik on someone from the product team. I'll just have a word with them. Tata Power, Gaurav, what should I say about Tata Power? Tata Power, Result. Tata Power which strike, sir? Jana ji? बहुत सारे मैसेज हैं, मतलब इट्स गेटिंग अ बिट मेसी, आई एम सॉरी। I'll just take Said's. Said is a regular viewer for us. Said, the call which is open is 19,450 call option. We had suggested it at between 13 and 14 for a target of 35.40. Stop loss is 4. You guys can, if you want, you can enter this with a stop loss of 4 right now as well. Right, Rajbhai? राइट। Mohan sir, actually, we had Tata Power's results yesterday. So today the stock is in result move. So Rajbhai, उसके हिसाब से आप इस पे दे दीजिएगा. एक क्वेश्चन लेता था पहले मैं एसबीआई का। सर एसबीआई के साथ पोस्ट रिजल्ट जो है इसमें काफी ज्यादा एग्रेसिव राइटिंग हुई है 580 पर। जो चीज हम पहले 600 पर देख रहे थे वो चीज अभी रिसेंटली 580 पर हुई है। तो आई विल बाय द स्टॉक इफ इट इज एबल टू सस्टेन 580, बट टिल देन इट माइट
either consolidate or come down a bit, but not negative. SBI is not negative, but whether I'll trade it through options or futures, I'm not pretty sure. So if I have to look at, because in derivatives you have to also look at the momentum, if the momentum is there or not. Otherwise, time value erosion will eat your profits. So I will look into it if stocks trading above 580, or I'm talking from the cash levels, or start closing above 580. Till then, I will not look at SBI. वहीं पर चल रहा है. आई वुड से कि 2 दिन पहले 579, देन 581, देन अभी एज ऑफ नाउ 577. सो हैजंट डन मच, बट let it sustain above 580. Regarding, sir, DB Corp is not an F&O stocks. We will not look into it. BankX, as of now, our Sensex expiries are not enabled in ICICI Direct. Hopefully, within a month, we will have that. And someone has asked about HDFC Bank. What is the probability of moving above 1500? Sir, any recovery which could be in the market, I am betting on HDFC Bank moving above 1500, and above 1505. It might give you another 3 to 4% immediate move. So that is the reason why I'm a bit positive on HDFC Bank. As of now, it hasn't shown any sign of short covering yet. And if you look at the call options, then 1500 call strike is hugely written. So let it move beyond 1500. What is the probability? I don't know, sir. I'm betting on it, but I don't know whether it will be able to move above 1500 or not. पिछले 700 पॉइंट का मूव, 500 पॉइंट का मूव आ गया है निफ्टी में, बट इसमें तो मूव आया नहीं अभी तक. So I believe that next round of upside should be led by HDFC Bank. And if you all of you will look at, then two main stocks, 25% of index weight is with HDFC Bank and Reliance, and both are underperforming. Someone has also asked about Reliance 2300. सर, ये स्टॉक जब तक 23 के ऊपर है, आई एक्सपेक्ट दिस रिकवरी मे एक्सटेंड. On higher side, yes, 2400. No, I don't see 2400, but somewhere close to 2360, 2370, it might attempt once again. So for me, I'll keep a stop loss at 2300 for Reliance if I am having any long positions. जी का सर आज रिजल्ट है देवांश जी. I will not make any comment on that. आरती इंडस्ट्रीज 490 पुट. सर परसों इसमें बहुत बड़ी कवरिंग हुई थी. ओहो, ना सर, अभी मत लीजिए इस पुट ऑप्शंस को, मत देखिए. केनरा बैंक के लिए सर, केनरा बैंक का व्हाट आई वुड से, यू कैन होल्ड, नॉट नेगेटिव. थोड़ा सा बाकी पीएसयू बैंक्स को इसने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया. आई फील कंसीडर इट, बट बिकॉज योर ऑप्शन इज अनदर 3.5% away from the current levels, then keep and stop loss, sir. अगर मुझे आपका प्राइस नहीं पता है, but let me check it on my charts if I can do that. Already near the lows, or I think 5.8 is the level below which I will not hold this call option. संचित जैन, बैंक निफ्टी का व्यू. सर ओवरऑल अगर कहीं पॉजिटिविटी है तो वो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी में ही है. बाकी अगर आप देखेंगे तो रेस्ट ऑफ द मार्केट इज रिलेटिवली वीकर. FMCG is under pressure, Reliance is under pressure. So what we, or Dinesh sir has also said कि 44,000 levels is a very crucial resistance. अगर जिस HDFC बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, if HDFC Bank starts moving, then perhaps we may even surpass 44,000 levels, and in that scenario, the next target would be 44,600 to 800. But for that to happen, either HDFC Bank has to move, or your bank Nifty should move beyond 44,000 levels. सर निफ्टी टुडे रिकवर और नॉट? सर अभी तक तो नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये रिकवर हो. बट ठीक है सर, मतलब देयर कुड बी सम बैड डेज एंड आई वोंट डिनाई दैट.
We are not always 100% right. If I'm going right even 70% of time, we are happy with that. Someone asked me about Tata Steel put. Sir, I will not buy put in the metals. Okay, that was even 110th. No, I will not buy put. I will not buy put in any of the metal names now, whether it's a sale or Tata Steel. No, sir. There might be some good recovery here. SCL Tech View. सर आईटी को मैं थोड़ा तो इग्नोर ही करता हूँ सर, मतलब आई एम नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव इन आईटी। एज ऑफ नाउ लग भी नहीं रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यूएस की यील्ड्स भी कम हो गई हैं, बट दी स्टॉक्स हैवंट परफॉर्म मच। परहैप्स 1280 के ऊपर हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिले, बट टिल देन आई विल अवॉइड। Bhimu ji, 450 call, can I exit? Sir, it's 8 rupees. My stop loss is at 4, given at 12 rupees, 12 to 13. So, if you are thinking that you cannot take more losses, yes, but I will stick to my stop loss, sir. Wipro 436, 430 put hold है। सर विप्रो का पुट आपने 430 का रखा हुआ है अभी तक, अभी तो 380 चल रहा है, तो आप बुक कर लीजिए सर। Arjun Chindarkar ji, Godrej Properties. Sir, yesterday we had recommended a covered call strategy, and today we अभी जब ये सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद we booked it somewhere around 18:30 if I'm not wrong. So we have booked it. GNFC, Aniruddha ji, GNFC is in ban, so will not be give any recommendation. Swati Yadav ji, any Nifty expiry recommendation? Ma'am, we have already given, already trading in losses. So many guys have said कि सारा पैसा डुबो दिया. So we had given buy in 450 call. That time it was trading around 12 to 13, currently 8.5. So, but view remains the same. Tata Power 255 at 3.6. Jana ji, I cannot make any comment today. And I also will ask you to wait for a couple of days to make any decision on your Tata Power call, because today it's more of a result reaction, and if it is holding above 245, perhaps there is some chances that it may recover again. So keep a stop loss of 245 and hold your position. L&T 3000 call. Virla Ravi ji, I am not going to respond to you. Sorry, sir. L&T 3000 call price at 53. Sir, you can hold this L&T, and in our earlier sessions, we have seen that this stock is someone, it should be hold. So अब क्या है कि because you have taken it in options, so why can't we do this कि आपने 3000 कॉल खरीदा ही है तो आप 3100 का कॉल बेच दीजिए and hold it for the settlement. Ramdas ji, 1660 call at 45. Sir, you can hold this PVR. We are a bit positive in PVR. We have already recommended PVR as our quant pick recommendation. SBFC Finance, sorry sir, we don't. Sir, someone has asked about the PFC. Sir, please don't ask me about PFC. My view hasn't gone well with the PFC. Tata Motors, Prabhu ji. Rajbhai, I think Dinesh sir tracks PFC really well. अच्छा. मतलब you guys were on file, आप लोग extreme ends पे थे उस time पे. Dinesh sir, are you there? Yeah, I'm here now. I'm So very yeah, much. yeah. What is your view on PFC?
Okay, 1 minute. So after a sideways move, PFC broke on the upside, doing quite well. I would थोड़ा सा लीप मारा हुआ है 270 जब तक है इट लुक्स ओके काफी बड़ा आज का ओपनिंग कैंडल है इसका फर्स्ट आवर ओके सो दैट्स द की इशू या टिल 270 इट इज फाइन 270 के नीचे द स्टॉक कम्स इनटू ट्रबल तब तक ठीक है तब तक कोई इशू नहीं है या गुड ओके यार आज बेबिंग कंटिन्यू अरे दिनेश सर आप हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ पूछिए ना सर आप नहीं मैं मतलब पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ तो मेरा हाँ बार बार स्क्रीन हो रही है। अच्छा संचित जी विप्रो कैश में आपने बाई किया है 436 पी पे बाई किया था ओके मुझे लगा आपने पुट ऑप्शन लिखा है शुड आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म आई डोंट नो सर विप्रो हैज बीन एंड वेरी वेरी अंडर परफॉर्मर और not sure whether you should buy it or not. And I'm not a fundamental analyst, so it would be better if I won't comment on that. सर एक श्रीराम फाइनेंस के ऊपर है कि someone is holding 2080 call from 23 levels. Please advise him. 2080 कॉल 20 हाँ 80. You want to share your screen, so should I stop Just 1 sharing? minute. CSHR एक बार वापस बोले ना 80 call. इसका सिंबल नहीं मिला SHRCIT I'm not getting any Okay, well, let me take it. या आप ले लो स्ट्राइक्स का मिल नहीं रहा मुझे सर 2080 काफी ओटीएम हो जाता है सर मतलब आपने ठीक है जब लिया होगा उस वक्त नहीं था बहुत और दूर है, इसीलिए स्ट्राइक का ऑप्शन स्ट्राइक का भी चार्ट नहीं दिख रहा है उसमें जी 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 राइट नाउ दैट्स 130 रुपीज अवे 130 रुपीज बहुत ऊपर है उसका हाँ सर और ये मतलब जो रीजनिंग हमारी थी कि ये जो है निफ्टी में एक पार्ट निफ्टी का एक पार्ट हो सकता है एक काम हाँ करो सर आपका मतलब व्हेन यू बॉट दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज 23 currently 11 just have a 2 or 3 rupees more stop loss somewhere around 7.5 or 7 and otherwise exit sir because डे टू डे आपका थीटा ही जाएगा इसमें ओके आई वाज getting into Tata Motors then I stopped so sir Tata Motors we had given call option we are positive here and expecting 670 sort of levels in the stock in let's say a couple of sessions sir Apollo Hostel 50 to 50 call 50 to 50 जी आप लगाइए तब तक मैं बाकी देखता हूँ विजय नारायण मिश्रा जी आई वांट टू बाय एचडीएफसी बैंक 30 नवंबर फ्यूचर सर इफ यू वांट टू बाय हु एम आई टू स्टॉप यू so what you can also do you can also buy a put option so that in case there is market weakness or something happens because as of now HDFC Bank hasn't given a breakout so your downside should be protected and that's why I'm asking you to keep a limited liability buy a put option along with your futures राज भाई जी 50 to 50 Apollo Hospital call जी as long as it is above 105 15-minute basis 15-minute basis it's fine उसके नीचे it slips down to 100 80 and so on so 105 is very crucial it's trading near its highs the 50 to 50 call so above 125 you can इसका अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं just a second the next resistance इसमें around 138 to 145 अभी 114 है so 105 very crucial
in my reading. हाँ जी. अच्छा, प्रदीप जी, what to do in my Nifty 450 call? Sir, we had given recommendation, and I am also giving it my view again and again. We also give the stop loss. So I will not change my view. I am still holding my view. And see, you should deploy only that much of capital so that you can trade another day. सो आई सी मैनी टाइम्स ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि हम लोग को अगर कोई रिकमेंडेशन दे और वो सही जाए, नहीं होता सर, किसी का नहीं होता। जो ऐसा आपसे बोलते हैं कि दे आर 100% राइट, वो आपसे झूठ बोलते हैं। तो एक स्टॉप लॉस है सर, एंड आई विल कीप दैट स्टॉप लॉस ऑफ 4। एंड ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा हमारे साथ, पहले भी हुआ है, स्टॉप लॉस लगा है, पहले हमारे टारगेट भी आए हैं। So just bear with us, take an stop loss, or if you are not used to having ever bear any loss, then please exit. My view is clear. What we had given here कि भाई 12-13 पे बाई करते हैं, देखते हैं ऊपर आता है तो। As of now, it hasn't panned out, but that doesn't mean that we should change my view. Just because market is not moving right now, it doesn't mean that it will not. It also doesn't mean that it will. So it's a view, and the view may go right or wrong. सर, एक पाई इंडस्ट्रीज का है 3600 कॉल। चिराग जी, वैसे तो कल रिजल्ट था, उसके बाद ही काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। आई एम एक्सपेक्टिंग 4000 लेवल्स टू बी टेस्टेड, बट दिनेश जी आप एक बार देख लें। कौन सा, किसका 3600 सर? पाई इंडस्ट्रीज। PI, okay, PI industry 3600 call. Okay. सीके शर्मा जी, अदानी पोर्ट्स का आज रिजल्ट है, तो विल नॉट मेक एनी कमेंट। हाँ सर। 145 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सीधा 185 दिखा रहा है, बट इट हैज टू सस्टेन अबव 145. द अर्लिएस्ट सपोर्ट आई कैन सी राइट नाउ इज अराउंड 100 to 85, 85 to 100. For 45 is looking like a 145, वहां से स्लिप मारा है आज. ओके, यू कैन से यस 115 एक सपोर्ट है इसका. 115 के बिलो आई वुड बी वरिड इन दिस. संदीप खरे जी, 11 रुपए पर आ गया है दोबारा से कॉल ऑप्शन, आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं सर। इट डजंट, मतलब आई शुडंट गेटिंग इनटू दीस थिंग्स एनीमोर। बलबीर जी, माय व्यू ऑन यूपीएल फॉर 1+ ईयर, जस्ट होल्ड इट। Guys, one very important thing is that in case you are getting jittered by the call going down, we had suggested between 13-14, it is at 11. अगर एवरेज देखें तो it is 13.5 का एवरेज, it is just 2.5 rupees down now. If you cannot handle this, then please exit it, because ultimately if the stop loss is triggered, you will get more jittered. So in case you're not able to, you don't have the, what do you call, you don't have the mental strength to hold it, you can exit it right now. Raj bhai, ये सही रहेगा, right? क्योंकि 11 rupees would be a perfect exit point for people. Ones who can hold it with a stop loss of 4, target of 35-40. Ones who are getting jittered by it, you can exit it. Some other next expiry next week, we are doing this every week, so आप next expiry में party में आ सकते हैं. That is not an issue. So it is like we just want you guys to trade with a free mind and do not get any emotional issues ना आ जाए, because stop loss जब नीचे आता है तो it doesn't look good. Even we don't want that loss. But if right now we are holding that view, and in case you are not able to handle this volatility, you can exit it. कृष्णा जी, मैं समझा नहीं। आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन फॉर 19400 कॉल, प्लीज सजेस्ट। सर वो अभी 45 पर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गौरव हैज टेकन योर क्वेश्चन कि आपने शायद 37 पे सेल किया था। तो सर बात ये है कि अगर मैं अपना पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ तो यानी आप सही जा रहे हैं। बट आप जो है देख सकते हैं, मतलब मेरे ख्याल से अभी तो आपका कॉस्ट के नीचे भी आ गया होगा जो मार्केट गिरा था। तो नॉट श्योर। नहीं राज भाई, जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये, इट वाज ट्रेडिंग नियर 45,
हाँ, अभी कॉल इज नहीं है 43, कॉल बट ऑप्शन बीच में में तो नीचे आ गया होगा ना ये काफी, 2 रुपए मतलब नीचे है, 37 पे नहीं, आई थिंक वो सेल 37 के आसपास किया उन्होंने। अभी डिस्कस दिस ऑल्सो दैट या प्रीमियम उसका टाइम वैल्यू ही नहीं है, 3 पॉइंट का ही था उसमें टाइम वैल्यू उसका। वी डिस्कस 20 दिस। रुपए का लो मारा है गौरव, आई कैन सी दैट। एनीवे सर, अब मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा जैसे दिनेश सर ने आपको रिप्लाई दिया था कि सर मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट कि अगर ये 57 के ऊपर गया तो ये फट जाएगा, राइट? राइट, उसके पहले आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ उसमें कोई शार्प मूव अपसाइड में। Okay, sir. So I don't know whether you have bought this option or you sold it, but for this option, 57 is an hurdle. Above 57, it might move sharply up on the higher side. Rohan Mehra ji, we have released our more picks from the research, and you can go through या the report. viewers, Muhurat pick is live on our Telegram channel as well as on our Twitter handle. If you, in case you have not seen that, you can visit ICICI Direct's Twitter handle. There we have written a thread in detail with all the Muhurat picks along with the rationale behind choosing them. Fundamental rationale is also given, so आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं. Also, you can stay on our Telegram channel where we give an update on these things regularly. राज भाई, आपके नाम आपने अगर देखा रहेगा मैंने कोई ट्रेड लिया है? हम्म, लगा दो नजर। सब गाली दे रहे हैं, आप भी दे दो भाई आज तो। देखो, अगर वो हुआ तो फिर तो 450 तो विल बी मिनिमम 50-60 रुपीज। हम्म। लेट्स सी। अभी 2 घंटे बाकी है, मार्केट में 2 घंटा I बहुत लंबा टाइम होता है। I think Rajmay Gaurav, this must have been after ages that all 3 days of the expiry except Monday mid cap, we saw Tuesday muted, Wednesday muted और अभी तक muted। मतलब कुछ नहीं, मतलब फुल डे टाइट स्क्वीज में एकदम पूरा। सर मेरा आज थोड़ा सा डायरेक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन वही है। आई हैव हाँ, गॉन थ्रू दैट दैट इवन कि आई हैड ऑफ दैट थिंग कि एक दिन शार्प, यस, 2 दिन म्यूटेड। नॉर्मली अगर वेडनेसडे म्यूटेड होता है तो थर्सडे सीज अ शार्प। यस, यस, एग्जैक्ट वही मेरा यस। भी वही रीडिंग था कि आज कुछ वैसा करेगा ये लोग मार्केट को। दो और और घंटा सर बहुत लंबा टाइम है मार्केट में, दोनों एक्सपर्ट्स, लेट्स जस्ट वेट एंड सी दैट्स व्हाट व्हाट ना, हैपेंस। दूसरी टू मेनी दूसरी चीज टाइनी देखिए बसंत कि कैंडल्स। आपके ऑप्शन में प्रीमियम ही नहीं बचे हैं। मतलब अगर देखोगे तो ऑप्शन में अगर कोई राइटर है ना, कोई भी राइटर 9 रुपए में राइट करने नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, कोई सेंस नहीं है ना 9 बजे हम्म। 9 रुपया में फ्रेश नहीं, राइटिंग आई करने आई का। आई नो अ माय लॉट ऑफ माय पीपल हैव। सिंसियर नो my सर। sincere and strong advice to those who are watching this show right now and who have some options shorted either side, not call या put specific नहीं बोल रहा हूँ, please put a SL in the system for the shorts। लॉन्ग तो चलिए आपका प्रीमियम वो डिपेंड करता है आपने कितना का लिया है उस हिसाब से, बट शॉर्ट का मत लगाइए। अगर बाय चांस कोई बड़ा कैंडल बन गया ना तो आपके पूरे ट्रिगर पूरा वीक का प्रॉफिट खा सकता है अभी नेक्स्ट डेट का, बिकॉज टू मेनी टाइट कैंडल्स, वन इट नीड्स जस्ट अ जेंटल पुश आइदर साइड। एंड तो if people have seen fin nifty 2 rupees went to 40, I यस, guess it is at एग्जैक्टली 40. एग्जैक्टली वही वही चाप बात का डर है कि टू मेनी टाइट कैंडल्स फॉर्मिंग राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, टू मेनी स्मॉल नैरो रेंज है। और 2 hours, just it will take one tick to change the damage, one tick like that। so सिस्टम में लगा दीजिए, ये मत करिए कि अगर उतना ऊपर जाएगा तो मैं अपने शॉर्ट से एग्जिट करूंगा। डोंट ट्राई टू डू दैट टुडे, स्पेशली दोज हु आर शॉर्टिंग स्ट्रैडल टुडे, खास करके उनके लिए। This could have been valid for me also. सी द हिस्ट्री एज इट ना, दैट जब स्क्वीज आता है तो ऐसे ही शॉट मारते हैं, ऐसे ही मर्डर करते So हैं। I'll tell you what happened. Yesterday I sold 450 straddle at 107 premium. या Today morning, that one spike took my stop loss away, मतलब, or else I would have printed big time. या So या it's important to have stop loss. Like, even if हाँ हाँ, we at our level are putting stop loss. So viewers, if you're listening to us, please never be short on the short side specifically. Please keep a stop loss in the system. That's very स्पेशली important. व्हेन यू आर डूइंग 9 रुपी 10 रुपी कॉल प्रीमियम्स, प्लीज लगा दो सिस्टम में। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका
एक वहां से घूम के गिरेगा, बट अगर गॉड फॉरबिड उसके ऊपर निकल जाता है, बाय द टाइम यू वेक अप टू कट इट, आपका ह्यूज लॉस हो सकता है ट्रेड में। लॉस नहीं तो रिटायरमेंट दे देंगे वो लोग मार्केट से। इमेजिन करो कि वो उस दिन वाला फिर निफ्टी टू का 150, अगर आप बाय चांस किसी ने शॉर्ट करके नहीं लगाया सिस्टम में, समझो एब्सोल्युटली। किसी का 40 रुपया का शॉर्ट था, और वो उसको लगा कि ये तो मैं 3 सवा 3 बजे आके स्क्वायर ऑफ करूंगा, और फिर सडनली देखता है उसको 150 रुपए। तो वो भी एक चीज होता है ना, यू मस्ट नो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राज भाई हो आप? गौरव, अब मैं लंच करने जाऊं? हाँ वही, मतलब मैं भी कर ही रहा हूँ। तो पॉज कर लेते दिनेश सर थोड़ा टाइम। यस सर, यस, पॉज करो। या so viewers, we'll be back. Rajbhai is going for lunch. I am just started my lunch now. So we'll be back in 30 minutes. So see you guys at 2 o'clock. Hello, Rajbhai? गाइस, सॉरी, Yeah, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है stop loss हमारा। trigger हो गया है. We So have guys, updated. please exit that. Rajbhai, but अगर आप देखोगे फिर से गौरव, वही are you हालत. there? हाँ आवाज आ रही है. हेलो राजभाई. हेलो हेलो. हेलो राजभाई, आपको सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ. गौरव, you there? हाँ. अभी अभी आई कैन हियर यू. यस. यस. तो राजभाई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है. वी आर एट 19,420. गौरव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर. अच्छा, so ठीक the है. stop loss got triggered, Gaurav. Yeah, stop loss got triggered. I have updated it on Telegram. Here also we are updating. Stop loss of 4 on 19,450 call option has been triggered. So once who are still there, please exit it. It is the trade recommendation. The trade is closed because the stop loss was triggered here. Okay. So Rajbhai, abhi at this moment, if you see, I think 450, 400 level ही लग रहा है जो. गौरव, मतलब गलत होगा बोलना, बट हाँ. राइट. एक बार व्यू गलत गया है, देयर हैज टू देयर, आई वाज होपिंग दैट हैजंट पैन्ड आउट, या. बट स्टिल आई आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग सम रिकवरी। सी, 400 में तुम्हारे निफ्टी फोर ये 6 करोड़ शेयर हो गए, राइट? हाँ. और 450 कॉल में भी 6 करोड़ शेयर है। हाँ. अब यहाँ पर मैं किस तरीके से इसको ट्रेड करूँ, आई एम नॉट क्लियर। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग रिकवरी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 450 में कुछ क्लोजर आएगा, बट वो तो बढ़ के अभी 400 का पुट और 450 का कॉल, बोथ आर हैविंग ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स, या. 6 करोड़ 6 शेयर्स। crore shares. तो या तो कोई मतलब अगर इस डेटा को देखूं तो यूजुअली दिस रेंज विल नॉट ब्रेक इजीली नाउ. नॉट गेटिंग ब्रीच इजली, यस। या. इट वोंट बी अ वेरी इजी ब्रेक. जहां भी ब्रेक करेगा वहां पे तो इट विल बी अ वन साइड 100 पॉइंट मूव. मतलब इफ दिस रेंज इज ब्रोकन, यस, इट शुड बी एन इजी 100 पॉइंट मूव इफ इट ब्रेक्स. सो आई थिंक राज भाई रेंज ब्रेक होने का वेट करना बेटर होगा rather देन स्पेकुलेटिंग राइट नाउ. यस, यस, यस। तो इट बेटर दैट वी जस्ट स्टे पुट. देखते हैं क्या हो रहा है, बिकॉज अब 19,400 कॉल में भी राइटिंग स्टार्ट हो रही है अगर आप नोटिस करो. दे कैन बी स्ट्रैडल सेलर्स ऑल्सो, क्योंकि हेल्दी 32-33 पॉइंट्स मिल रहा है एट दिस 1.5 आवर के लिए. 32 पॉइंट इज नॉट अ बैड ट्रेड फॉर अ सीजन ट्रेडर.
हाँ, बहुत मतलब होने लगा है, करीब 1 लाख शेयर 19,400 कॉल में आ गए हैं। एग्जैक्टली। बट अगेन यार, मतलब जिस तरीके का ओआई है ना, हाँ। 400 पुट का और 450 कॉल का, हम्म। दिस इज वे वे हायर। तो अगर इनकी वाट लगानी है तो जैसा तुम बोल रहे हो ना कि अगर मार्केट में मूव आया देन इट कुड बी 100 पॉइंट्स मूव। या इजी, इट कैन ईदर बी बिलो 400, below 385 or above 465. That is my level, अगर मूव देखना है तो। Gaurav, the Yes, sir. 19400 put chart is saying जब तक वो 40 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, राइट हाँ। नाउ 32 है, वो हाँ। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. It या won't मतलब it won't be सर able to give वी, you yes, start sustaining above 40, which is $8, or $8 move for this strike या uh, right now would mean sorry, which put am I seeing? One second, one second, sorry. 19400 का put, right? ये कैसे दिखा रहा है मेरे को स्क्रीन में? There's सर something. मैंने, आप 450 पुट की बात कर रहे हो वो सर? मैं फिन निफ्टी देख रहा था, माय बैड माय बैड. एक सेकंड, 19400. Sorry, 19400 above, starts closing above, what do you call, 8, तब आपको 14 to 20 दिखा सकता है, उसके पहले कुछ नहीं है. राइट नाउ 3.75. सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फायरवर्क्स. 19450 भी पुट देख रहा हूँ जो इन द मनी का पुट है. In the money put trading at 27, there's a huge wall at 45. ओके। Huge wall at 45. इतना इजी नहीं है 40-45 क्रॉस करना उसके लिए. और बिलो 20 तो वो भी चांस नहीं होता है, विच इज 26 नाउ. उसके लिए बिलो 20 वो भी नहीं, विल स्ट्रगल. एटलीस्ट लेट इट फ्रॉम अ, यू नो और लोएस्ट टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी इट इज ट्रेडिंग बिलो द मिनिमम रेजिस्टेंस. 30 is the minimum resistance for from a 5 minute टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू. जो एल्गो ट्रेडर होते हैं, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है. एल्गो में भी आपको बाई सिग्नल नहीं देगा वो 30 के पहले. ओके। या बट सर एक चीज देखिए, ये कॉल ऑप्शन इतने महंगे क्यों हैं? मतलब 400 पुट, 400 कॉल इज 33 एंड 450 पुट इज 25। ओके, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी पुट की 30 रुपीज होनी चाहिए। देखिए, इट्स अ सैड थिंग टू से बट इट इज ट्रू. 90% जो सेबी का आया है कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी इन डेरिवेटिव्स, राइट? और अगर आप कल का डेटा क्लोजिंग देखते हैं तो 5,82,000 clients were net short in index puts, and they were in return करीबन, I think, 25 or 85,000 long in index calls. So the majority of the people, clients are retail, HNI, everybody who are chasing contracts, right? While the prop desk and all were not. Prop desk was very bearish on the expiry today, and it's the chasing ना. लोग चेस कर रहे हैं, भले क्वांटिटी कम चेस कर रहे हैं, बट people are chasing those contracts. That's why that kind of a premium craze is happening, right? Yes, sir. ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब करो, अब तो ये है कि 400 450 का कॉल पुट भी आपको 8 रुपए में अवेलेबल है। Strangle. हाँ, 400-450 का strangle. 8 रुपए मिल रहा है। अरे यार, मैंने ये सुबह ऐसी टाइम पास में 29 रुपीज पे बेचा था, 18 रुपीज पे कवर किया था। अभी लग रहा है काश होल्ड किया होता। इंटरेस्टिंग। बट या मतलब आई, इधर इट इज एक्सपायरी हियर, मतलब मेजर मतलब मेजर ऐसा पॉसिबिलिटी। नहीं होता दिनेश जी, मतलब जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि all four expiries were extremely range bound. So we don't see that. I haven't seen that. At least we have seen a moment once in a week on the expiry day.
बट दिस टाइम ऑल 4 days वर क्वाइट रेंज बाउंड एटलीस्ट फ्रॉम द एक्सपायरी परस्पेक्टिव। कल आपका बैंक निफ्टी जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं पर 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ। उसके पहले फिर निफ्टी एंड ऑन मंडे मिड कैप निफ्टी देयर वाजंट मूव एनीवेयर। एंड टुडे निफ्टी की 400 से 450 की रेंज में बैठा रह गया, बल्कि एक्चुअली साढ़े चार इसका सौ गया इसका ही नहीं है। एक और रीजन है राज भाई कि आप मार्केट का देखो, कल कैश सेगमेंट में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, बहुत लो वॉल्यूम था कल कैश सेगमेंट में। और उसके पहले 2 दिन हैवी वॉल्यूम हुआ था कैश सेगमेंट में। सो विद दिवाली अप्रोचिंग, द टेंडेंसी ऑफ मार्केट इज टू मूव अवे फ्रॉम दिस एंड फोकस ऑन कैश स्टॉक्स। अभी कैश स्टॉक, मल्टी बैगर, वो ये एटसेट्रा, पूरा इंटरेस्ट वहां का लोगों का शिफ्ट हो गया। और जो एंड एज यूजुअल रिटेल तो इतना जल्दी अपना एग्जिट नहीं करता है पोजीशन को। सो 5 लाख, दैट्स द बिग क्वेश्चन यहाँ पर। बहुत टाइट स्क्वीज है। हाँ मतलब अब तो 6.5 करोड़ शेयर हो गया गौरव। हाँ, अब नहीं हो, अब बहुत मुश्किल, मतलब if somebody is asking for nifty view right now, the nifty view right now is a ping pong level between 400 450, 20 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। if if it manages to move outside 450 and 400 by 245, then we can see some fireworks. तो राज भाई एक बार याद है ऐसे ही कर रहे थे हम, एंड में वी टुक अ कॉल, वी टुक अ पोजीशन एट, यू गेव अ रिकमेंडेशन नियर 245 250, और वो 5x तक जा चुका था। तो आई थिंक आज वो दिन हो सकता है, मतलब वो देखो अपॉर्चुनिटी में मैं गौरव, नहीं, मैं 5x की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो हाँ, ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी आज मिल सकती है, हमें वैसे टाइप की ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है व्हेन वी ट्रेड नियर 245। देखो गौरव एक चीज समझो कि अभी जो है आपका 19,400 का कॉल जो है 32 रुपए का है, पुट 25 रुपए का है। दोनों को बेचोगे तो तुम्हें 7 रुपए मिलेंगे। और 400 या 450 का दोनों ऑप्शन बाई करोगे तो 7.5 8 में बाई करो। जो रेंज है ये आपको भी लग रहा है कि नहीं निकलने वाली। अब यहाँ पर मेरे जितने छोटे एक्सपीरियंस है मार्केट में उसके हिसाब से तो आई डोंट सी दिस हाँ ब्रेकिंग। तो फिर अब मतलब अगर बेस्ट केस मान के चलिए कि अभी अगर 450 लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा हर्डल हो चुका है, तो 30 रुपीज का बाई करके 50 रुपीज का टारगेट सोचना, 18 रुपए ऊपर और खोने के लिए पूरा का पूरा हाँ, 32 रुपए। तो दैट डजंट मेक डजंट सेंस। मेक सेंस। यस। नहीं, अगर अगर किसी को करना है, सी मतलब इज द ऑब्वियसली लैंड कॉस्ट टू यार, मतलब मार्केट में उस तरह की गिरावट नहीं आई है जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डिके वी हैव लॉस्ट द ऑप्शन वैल्यू या because market has been range bound. It या hasn't moved up, right? But ये it hasn't declined also. लेट्स सी राज तो भाई, 25 का डेल्टा है, यहाँ से 50 पॉइंट का मूव भी मिल गया तो वो डेल्टा 70.7.8 तक चले जाएगा। हाँ तो 450 का कॉल 4.5 रुपए का है ना, तो वो हो सकता है 5 टाइम्स आपका अगर 70 आ गया तो। पॉसिबल। हाँ बट वी कैन नॉट रिकमेंड इट या नाउ वी कैन बिकॉज नॉट रिकमेंड इट नाउ, मतलब यू कैन नॉट रिकमेंड, मेरा तो वैसे भी रिकमेंडेशन अलाउड नहीं है। Raj bhai, uh, हम्म if you are bullish in this market right now, 19,450 का put 25 rupees है, okay? हम्म If you double short that put 19,450, that's $50, and you buy a 19,400 and 19,500 put, that is combined $73, right? So you are protected down till 19,375 in that case, in that scenario. और अगर you have a close of expiry near 19,450, तो you make some money in that trade वैसे। अब देखो उसका बटरफ्लाई बन रहा है क्या, डायरेक्शन बटरफ्लाई। नहीं सर, मतलब इसमें मेरा जो रिस्क है वो 25 रुपए का है, राइट? हाँ, राइट। तो अगर मुझे वो रिस्की लेना है तो इफ मैं यू आर सीधी इफ यू आर मैक्सिमम। इफ यू आर हाँ बुलिश एट दैट स्टेज, अगर आपको लगता है यहाँ से उस टाइप का बाउंस मिल सकता है। सर मतलब आया, अगर उस चीज के लिए खेलना है तो फिर इट्स बेटर कि हम दोनों आईटीएम कॉल और पुट दोनों खरीद लें। क्योंकि नहीं है ना अब एकदम, हाँ, राइट। चार तो 75 हाँ सात कुछ रुपए नहीं है, 6 रुपए 6.5 रुपए 7 रुपए में एग्जैक्टली मिल रहा है।
आज आईटी ने थोड़ा धोखा दे दिया सर, मतलब आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से वीकनेस आएगी आईटी में। इनफी इज स्टिल मेकिंग लॉस। और ब्रॉडर मार्केट इतना अच्छा है, ये हैवी वेट्स जो हैं ये खराब कर रहे हैं आज। वही मैं आपको बोला ना, दिवाली टाइम मुहूर्त है, द फोकस इज मूव्ड अवे टोटली ऑन नॉन heavy weights, on small caps, mid caps and large caps where there is no index impact. और आज 12 स्टॉक के रिजल्ट्स हैं, ऑल दो स्टॉक्स हैव नो वेटेज ऑन द इंडेक्स एंड उनका इम्पैक्ट फील नहीं होता है ना इस समय ट्रेंड में। द होल मूड इज शिफ्टेड, sentiment is somewhere else right now in the market. I'll just update to the viewers who are listening to us. Viewers, we are waiting for a move. Till 2:45, we are in the wait and watch move right now. We had a call which was given at which was 19450 call option where the stop loss got triggered. If you're wondering हम क्या कर रहे हैं, हम बस wait and watch कर रहे हैं और just trying to see what we can do. So in case there is a move or something that we see at 2:45, there can be a recommendation from Rajbhai. Until now, we're just in wait and watch mode. Vishwanath Hirimat sir, what do you want me to agree with you? He is saying it's not a good idea to buy 450 call. Right now, buying anything is not a good idea, I feel. 450 put, 400 put also, 450 put also, call also. Yes. That's why वो जो there is a saying in the market, never trade a dull market, especially Yes. aggressively. जब dull होता है तो आपका कोई फायदा नहीं है. You have to wait for the boundary line to Dull markets are the best markets. from a writer's point of view, from a writer's point of view, true. Okay. Okay. Dinesh sir, Just sharing one thing on the screen, Gaurav. Just yeah, one yeah, second. please. So this is Nifty 15 minutes. Even if I remove the Ichimoku 1 second and I show you, ये जो line है, अगर कोई डाउनसाइड पैनिक होगा तो इस लाइन के नीचे ही होगा, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला, और वो है 400. तो अगर मैं इस पर इचिमोकू अप्लाई करता हूँ, सो देयर इज अ ह्यूज सेनकाउ बी in the 15 minute at 395. So you need a convincing drop below this for panic. So 380, 395 is that convinced. So because we are approaching expiry, let's look at it in 5-minute point of view. Okay. 5-minute point of view. So ये रहा 401. You need a move below 400 to see that put spike. नहीं तो कुछ नहीं करेगा. 5-minute टाइम फ्रेम, उसके पहले कुछ नहीं करेगा. पुट लेने का भी फायदा नहीं है तब तक, और टाइम इज टिकिंग अवे फ्रॉम योर साइड. So Rajbhai's view that buy both 400, 450 is still नहीं, worth a no, not point as of you, not as you, not as you. Problem हो जाएगा कि people will ask. sorry. Because I was thinking about that butterfly sell, na? So he said the risk is lower in the 400, 450. So only if this 400 break sustain, then we can see a 20 point, 10, 20 point move. That will be super fast trading. बहुत fast trading चाहिए उसके लिए, and which is only possible in algo markets. अच्छा ठीक है सर, आप यही कर रहे हो तो can we just see Nifty in a higher time frame? What would be your range going ahead next week into Diwali? Yeah. So my view does not change about, my view on Nifty is heavily dependent on Bank Nifty. और बैंक निफ्टी जब तक वो 43,850, 44,000 के ऊपर नहीं निकलता है, वो निफ्टी को 19,500 के ऊपर इतना जल्दी नहीं जाने देगा. और उसके अलावा इन द निफ्टी आई कैन सी अ
kind of a wedge structure in the lower time frame. Okay, it's a wedge structure which is in a bit of a dicey scenario. जब तक वो 375 के नीचे सस्टेन नहीं करता, इट्स नॉट वैलिड. 375 के नीचे दैट द वेज बिकम्स एक्टिव फॉर अ डिप टूवर्ड्स. अगेन अगर हम डिप की भी बात करते हैं तो look at the daily Ichimoku. Okay, there's a support at 300. Okay, so that's the kind of support right now. It's running into Diwali into 300 support, 500 resistance. Till Diwali, that's the zone we are talking. 300, 500. Yeah, 19300, 19500. Breach on either side. एक साइड की पार्टी शुरू, एक साइड की पार्टी शुरू. Okay. Yeah. Nice views. I like this. Because एक दिन हॉलीडे भी है ना नेक्स्ट वीक, so range gets narrower. Actually, it's a good week for sellers because they can get 3-day. अच्छा, ये जो राइज भी आया है, अगर आप नोटिस करो, राइज की कैंडल साइज देखो, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वन एंड हियर वन, सब कैंडल्स देख रहे हो, अनसर्टेनिटी दोजी कैंडल, स्मॉल एकदम मना बॉडी कैंडल्स बने हैं पूरे राइज में. सो इट्स नॉट कि मना अपसाइड नहीं जा रहा है निफ्टी, ऐसा भी है कि नीचे नहीं जा रहा है. लॉन्ग लोअर विक का मतलब होता है कि नीचे से जबरदस्त बाउंस बैक मारा स्टॉक में. तो इट्स totally in a narrow squeeze range. You can't think from those angles कि बहुत बड़ा धमाल मिलेगा. वो बहुत बड़ा धमाल के लिए ये 19300 को कन्विंसिंगली ब्रीच करना पड़ेगा. So धमाल से याद आ रहा है, ये कह रहा हूं मैं, निफ्टी इज नियर 410 नाउ. हाँ, तो इसीलिए बोला ना कि वो आपको रेंज ही नहीं दे रहा है ब्रेक करने का. सो ये स्क्वीज रेंज है, इसमें डायरेक्शन क्या खोजोगे आप? either you buy the support, sell the resistance, or you wait for a breakout. Yes, राज भाई, आप सहमत हो मेरे साथ? हाँ सर, मतलब अभी जिस तरह से मार्केट है, जिस तरीके से रेंज में चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि करना भी किस तरीके से चाहिए. Let's look at CNXIT जो आज धोखा दे रहा है मार्केट को. See again, if it fails to hold 36,600 तो ये भी प्रेशर में डाल देता है CNXIT को. IT भी प्रेशर में अगर आ जाता है तो yes, then you have to think like that कि ये क्या कर रहा है. But it is at a support. अगर इसको ऊपर जाना है वापस, so it will try to hold this 30,600 under all circumstances. You know, ये जो लेवल है 550, 600, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर प्योर जस्ट लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको. Okay, then we have a kind of a scenario which IT अगर बैंकिंग सपोर्ट नहीं करता है नियर 36, ये कुछ ऐसा वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, which will again stop Nifty from falling. Okay, Rajbhai, Dinesh sir, Nifty is below 400, near 395. Let us just focus, keep our eyes, everything focused there. Right, here we go. Yeah. See, at this wall, at this Senkao A wall, Senkao B wall, और ये इतना इजी नहीं है इसको ब्रीच करना आज. No. सर हम उसको ब्रीच करने का दुआ करते हैं, तो because we'll get a nice trade here if that happens. Okay, here we have the 19400 का पुट करूं. Yeah. वो 7 का जो टोटल था वो अभी 11 रुपए का हो गया है. हाँ. Yes, so it's trying to close above 7.5. I can see a resistance building up around 15 to 21 in that. Rajbhai, 19400 put आपका कुछ यार अभी मतलब मैं थोड़ा सा आज उसमें आ गया हूँ. पहले तो don't want to make any excuses, but my view has gone wrong and I wasn't expecting it, so not okay with any trade right now. Fair enough. I can get your point, Rajbhai, but my reading is जब तक ये 15 के नीचे है, I will not rule out the possibility of this closing near 5 to 0. 15 के नीचे.
इसका जीरो होने का चांस, बट दैट डजंट मीन मैं 8 रुपए का चीज को ट्रेड करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं ट्रेड करूंगा, ये सब रिस्की काम नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल। बट दैट जो होता है ना कि भाग जाएगा, वो नहीं लग रहा है मुझे, rather not jump into this trade. And below 385 would be a good chance. Like if it gives a close It could below 358. it could in the next 30 minutes create a trap ना, जिन्होंने जीरो हीरो बोल के अब एंट्री लेंगे, it can do something like this, गौरव, यहाँ अरे नहीं, कुछ test कुछ लोगों करके। ने, आई एम प्रीटी श्योर सर, इन द मार्केट everyone who wants to take that 7 rupee 6 rupee thing, हाँ 19400 का OI सुबह से 6 CR जा रहा था. This will just take them off. This will just trash them big time. या वो है, वो This है, will वो trash them जरूर है। because 4 का 8 हो गया है वो. And if it goes to 12 14, it will be a disaster for these guys. So they'll या be tested big time. I am seeing it's that sort of a move. या But below 385, not now. वो जबरदस्त है ना, एज वी स्पीक। Yeah. 13 का 7 नहीं, ये वही. टॉर्चर चेम्बर है, टॉर्चर Yes. चेम्बर, ये जोन इतना जल्दी नहीं देता है लोग इसको। दिस इज जस्ट लेयरिंग यू टू गेट इनटू द ट्रेड। No, we'll not do. This is not the right time to get in there. ट्रू For ट्रू sure. ट्रू ट्रू। And my condolences to everybody who sold it at 4 rupees, 3 rupees just to get that. कौन करता है वो काम है, 4 रुपया 5 रुपया वाला, डजंट Well, मेक सेंस। नहीं, एल्गो में हो जाते हैं कुछ ट्रेड्स, बट वो एल्गो एग्जिट भी वैसे ही होता है। एल्गो डज नॉट अंडरस्टैंड प्रीमियम वैल्यू क्या है। एल्गो को तो अगर आपने सिग्नल डाल दिया कि इसके ऊपर ये करना है, उसके नीचे वो करना है, hmm, वो एग्जीक्यूट कर देगा। absolutely. I see. 1 minute, crucial 1.5 minutes for a lot of people. दूसरा चीज राज भाई, अगर आप नोटिस करो, पुट कॉल रेशियो क्रॉल कर रहा है, क्रॉल लिटरली क्रॉल कर रहा है, 0.17 से 0.120, कुछ मूवमेंट ही नहीं है उधर पुट कॉल रेशियो में इतने दिन से। इतना बड़ा जंप आया 600 पॉइंट का, और 600 नहीं, सॉरी सॉरी, या अप्रोक्स लाइक दैट। और नहीं सर, पुटकॉल रेशियो आपका काम नहीं करेगा सर, क्योंकि क्या रहता हाँ है ना कि आपकी रोज एक्सपायरी आ रही है। हाँ तो अगर आप अकेले निफ्टी की बात कर रहे हो तो ठीक है, बट क्या है कि ऑप्शंस में जो मेजर प्लेयर्स हैं, दे हैव बिकम ऑप्शन राइटर्स, एंड हम्म, दे आर समवन हु आर राइटिंग स्ट्रेडल्स और स्ट्रेंगल्स। ट्रू। तो दोनों बराबर मान, दे डोंट डू रेशियो। अपना तो जिस दिन बहुत बॉटम, होना चाहिए। अपना जिस दिन बॉटम हुआ था निफ्टी में, उसके एक दिन पहले 0.55 तक गया था। ओके, फिर नेक्स्ट दिन सीधा जंप मारा था 1.25, फिर डिप मारा 1.15। अब इस 1.15 से यहाँ सिर्फ 1.2 गया है, इतना डिस्टेंस में पुट सर कॉल वो रेशियो। आपको रेंज ब्रेकडाउन था जब आप 19600 से आप गिरे थे ना, तो उस वक्त तो पुट हाँ, राइटर्स खत्म हो गए थे मार्केट में, राइट राइट 2 दिन। राइट। तो दैट वाज द रीजन। अदरवाइज इफ यू सी इन नॉर्मल मार्केट सिनेरियो, इन अ डेज लाइक दिस, जब आपका 200 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव होता है ना, you don't see much of this put call ratio moving down or up. राइट राइट So राइट। I have stopped looking into put call ratio because जो इसके पीछे की thesis थी, जो इसके पीछे की reasoning थी, I believe it's not there anymore. या पहले जो हमारे यहाँ डेटा है पीसीआर का, वो जो रेंज हम लोग पकड़ते थे लास्ट हिस्टोरिकल डेटा, दैट वाज मंथली ऑप्शंस। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ सो मेनी वीकलीज, द पूरा उसका पीसीआर में थोड़ा डैमेज हुआ है। यू कैन ओनली लुक एट एक्सट्रीम रेंज नाउ इन दैट। सी गौरव, इवन द इचिमोगु बेसलाइन इज एट 385, which is So last। I am, just give me a moment, sir. I am actually keeping a close eye on 19400 put. पुट। Yeah, yeah. दोबारा से 4 रुपए का हो गया गौरव। हाँ, वही हाँ वही देखा ना, क्या बोला मैं कि नहीं जाने देंगे उसको लोग एकदम। दिस 15 minute इज वेरी क्रूशियल। मैं पूरा ध्यान उस पर ला के एंड बैठा हूँ। गौरव, वो जो हुआ है ना, जब ये आपने 4 रुपए का 10 रुपए इस पुट ऑप्शन को होता हुआ देखा है, हम्म। तो उसमें आपके करीब 1 करोड़ शेयर भी कटे हैं। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं मेरा पूरा ध्यान उस पे है, क्योंकि 4 19400 कॉल ऑप्शन इज नाउ 3 CR OI. Either तो someone is गौरव, coming and या writing straddle,
Yeah. So what we are seeing actually is a lot of smart money who Yeah. had written out here. वो covering कर रहे हैं ना अपना माल को. Sir, this is very interesting. I'll just keep quiet for 5 minutes. Let me just observe and see what I can remove from this movement. एंड दिनेश सर मतलब जब No तक local गौरव guide, शांत था. no local guide. You do not enter 19400 call option. Right now, entering any trade is a bit risky. But Rajbhai, Dinesh sir, I'll request you guys just to focus on that Senkau B and this 15-minute candle. Yes, I just want to draw this line and see if Yeah, yeah. there is a surge, where can this surge go? Okay. Candle. Yeah. So, yeah, the surge. Let's see if it can get into the cloud, then push its way up. This is 5 minutes. Okay, 5 minutes. 15 minute struggling to even survive our. So probably stretch करेगा तो 14 करेगा वैसा. But फिलहाल तो कोई चांस नहीं दिखा रहा है. Last 15 minute, 19,400 put option minus have covered 75 lakh shares have been covered almost. That's what Rajbhai also said. And in last 10 minutes, 84 lakhs. And in 5 minutes, 24 lakhs. So in last 10 minutes, you've seen a major covering by put writers. 30 minutes to come here. But last 10 minutes, because see, sir, it is now near day's low. Nifty has come to day's low spot, but the fair price is 395. yeah. Not And easy, it's boss. gone. And it's gone now. Now it's gone. This 392-ish level is important, sir. वो भी गया, sir. If you see, we are at 391. Now this doesn't look good. If this sustains here, we will see a massive. Rajbhai, हाँ Rajbhai, गौरव. आपके पास लाइसेंस है बोलने का. आप हो नहीं नहीं रजिस्टर. गौरव गौरव मैं मतलब मैं जंप नहीं अच्छा. करना चाहता, मैं गलत हो गया हूँ आज. और Okay, okay, हाँ, okay, आई जस्ट अवॉइड गिविंग एनी मोर रिकमेंडेशंस. okay. No problem, Rajbhai. Is Dipesh giving anything? Dipesh has any view? Dipesh is also not in the mood of मतलब he was also a bit bullish like me. Okay, okay. No worries. Doesn't pan out. No worries. I think Dinesh sir, now it's at a very crucial juncture. हाँ, you can. मैंने तो लाइन भी ड्रॉ कर दिया Yeah. बस. ये रेड लाइन. लक्ष्मण रेखा है, अब रावण इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों सर? Oh shit. मैं वो सोच रहा हूँ जिन्होंने वापस 4 रुपए में बेचने की गुस्ताखी की होगी या 8 रुपए में बेचने की गुस्ताखी की होगी, वो क्या करेंगे? नहीं, अभी मालूम है इस मार्केट में क्या होता है. आपने इस लेवल पे लॉन्ग किया या इस लेवल पर लॉन्ग किया 11 पर 22 पर, और आप यहाँ एग्जिट हो गए. ओके, नाउ सडनली यू हैव दैट, अरे ये तो वापस ऊपर जा रहा है. ओके, दोज आर द डेंजर ट्रेड्स, प्लेइंग विथ योर माइंड राइट नाउ. Trust me, sir, if we break 390 in before 245 ना, massacre is coming. आई एम स्टिल स्टैंडिंग बाय माय व्यू दैट ये लक्ष्मण रेखा है. इस इसका 15 रुपया विच इज 385 380 स्पॉट. उसके पहले कुछ ड्रामा नहीं हुआ. ठीक है, मैं भी उसके लिए रुका हूँ. 390 is my level. 385, 390 is also my level. तो उसके पहले कुछ ड्रामा नहीं करेगा. चैनल में है 1 2 3 माइट कम डाउन टू दिस जोन. बट गौरव एक चीज समझो, मैं मतलब ठीक है, तुम्हारा स्पॉट लगातार 400 के नीचे चल रहा है ना. हाँ, लेकिन फेयर प्राइस वो जगह आप देखोगे तो नहीं चल रहा. हाँ, वही मतलब एक वही ही तो चीज वही तो देख रहा हूँ मैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है. There's a nice 9-10 point का difference between the spot and the premium price if you see. Yeah. This has to be more than 12 and it is near 8 rupees.
And it has to be almost 0.8, 0.7 का delta पे होना चाहिए था ये. Still feel last. See, Gaurav, Yeah, 5,82,000 कल net short थे clients in index puts, not necessarily 19,400 put, but in different puts across all four. Okay. yeah, Now, for those who are short in the 19,400 put, okay, and who did not cut it, they are now coming out to cut it now. और yeah. सामने से जो put buyer थे, who were prop desk and FII. सो वो बैठे होंगे ना अभी आराम से काटने के लिए उसको. Interesting. This 245. I'll still wait for 245. Till we don't see a Yeah. 15-minute candle close above $8, ये कुछ नहीं करेगा. Hmm. सिर्फ वही मैं भी वही सीखा हूँ. मतलब I am also with you. I'm completely with you. I'm just waiting that this कुछ एक्शन मिले यार सर. मतलब मेरे को ट्रेड कुछ ट्रेड तो है नहीं. ऐसा नहीं कि there is some trade that I've taken and I am waiting सेम for. यार. आई एम टेलिंग यू ना, आई एम आल्सो जस्ट वाचिंग उस एंगल से कि कुछ Yeah. नहीं करने देंगे वो लोग. It's They just expiry. inflated the they just inflated the premium to get in few trades like this. Yes. Ah, some expiry action. अरे लक्ष्मण रेखा you have written there. No, sir, 19,400 let's. का स्ट्रैडल राइटर जो आज करके गया होगा सुबह, उनका तो आज एक्चुअली दे आर द बुल्स आइज. I will not. I don't want to comment on this. I seriously don't want to comment on this. अगर आप और राज सर ये दोनों ये चीज ले रहे हो तो please do not talk about नहीं, but 19400. who would have thought at 19,450 to ride a 19,400 straddle? That's as it is a big risk. 50 point नीचे का straddle लेके. Both of you all don't listen to me sometimes, na. So that is. No, Gaurav, the first trade we gave in the morning was 19,400 struggle only. Siddesh has given that. हाँ. But उसके बाद मतलब we even booked it somewhere around 10:30. But again moving towards 450 and then coming back to 400. ऐसा कुछ हुआ नहीं है यार. 50 पॉइंट हुआ है. But because we are getting into options, so ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया वो आज. क्या है आप लोग सुनते नहीं ना मेरी बात. सिद्धेश भाई ये है कि जो सुनते हैं. Dinesh sir, sorry viewers, this is this for this conversation. Dinesh sir, हाँ जी. Tuesday को I told him 450 straddle shot 150 points मिल रहा है. 150 सिद्धेश भाई थे. हाँ. Tuesday नहीं करेंगे. Actually, even I wouldn't have gone, and I'm with him in that matter. तुम्हारा कोई सुनता नहीं है. You can take out an emoji of that. नहीं I'm because राज भाई मतलब मैं तो एक दो बार सही होता हूँ. राज भाई is like has been out of 10 I'm correct 2 times. Raj bhai is correct 8 times. So I will never go against him. No, Plus with true, his very 20 years true. of experience. So I am just a kid here who has like 3-4 years experience. See, Please check HDFC Bank. Viraj sir, Raj bhai, you want to take this? HDFC Bank आपका favorite? अगेन मतलब अगर आप देखोगे तो 1500 नहीं निकाल रहा ना. मतलब ठीक है मार्केट के साथ गिर नहीं रहा बट ये चल भी नहीं रहा है. एंड माय व्यू इज कि यार ये 1500 एक बार निकलेगा तो मैं मतलब इट शुड बी लाइक कि आपको 1560 1570 इमीडिएट आ जाएगा. But huge call writing at 1500 call strike. Overall open interest is very high, more than 15 crore shares. तो अभी तक इसने कोई साइन नहीं दिया. पिछले 500-600 पॉइंट की जो मार्केट में रिकवरी आई है इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया. तो मैं मतलब मेरी सारी आशाएं इस पर हैं बट अभी तक ये खोटा सिक्का है. जब 1500 के ऊपर आएगा देन वी शुड लुक एट Okay. इनटू इट. बट हाँ Okay. So yeah, so Raj view might go right. see the typical cluster support. Yeah. Hourly 385. Okay. Wait, sir, just 15 wait. minutes. 15 minutes. 383.85. You wanted a candle close about what level for 19400 put?
I want it close below 380. उसके पहले कुछ नहीं. It's a bear trap. प्रॉपर बेयर ट्रैप बनाया है आज. माना आज जो पुट बायर है आज का, उनका इस लेवल पर कि मुझे कुछ मिल जाएगा. सीरियसली आई हैव माय थिंग ऑन इट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सपोर्ट राइट नाउ. So too close to a support to take a continuous bearish trade at this level. Raj bhai, आपसे permission हुआ. I think Siddesh would be the best person to comment on this as well. How is 19,200, 19,700 strangle for next week? परफेक्ट है. 200 is 23 and 700 is 16 right now. I think 40 point का range है. हाँ, Dinesh और sir? आपके पास only 4 days are there. Yeah. कुछ नहीं. 3 मिनट और. 3 minutes. Then if it doesn't close below that, we'll end the stream at 2:45. We can end it. Oh, okay. गौरव की सुन रहा है. Okay. Yeah. Just. It went to 10 rupees, sir. हाँ, 11 point. Yeah, something level. It is 10.25. Yeah. Now it has कोशिश again कर. come down. Yeah, so it might come up. Test this line again. Let's see. We still have 2 minutes, which is a very long time in the markets. The fair value is not reacting well. The Nifty, if you see the synthetic value, it is still 9401.85. Because call plus strike price plus call minus put will give us that value. 19,400 plus 9.56 minus 7. So total is 2 rupees. 402 का level का सबसे बात हो रहा है. 6 rupees difference. If that 6 rupee comes in, that is 6 5 30. That becomes 12 rupees. This premium should trade at 12 rupees, but it is trading at 8.5. Last 1 minute. Come on, Nifty. 389 low. But that synthetic value is not moving, sir. Not fair. Time running out, na? Yeah. If this would have happened at 2:30, na, maza aa gaya. Right. Raj bhai? Yeah, and I think the Yeah, Chico will Raj take some. call पे है. Acha. दीपेश जी. See again back to pavilion. Yes. Guys, there is no recommendation, please. Okay, we are just seeing what happens. If kuch hota to we would have given. There is no recommendation. We're just waiting and watching and seeing the market. But sir, see, imagine na, the algo guys, those big boys have a very nice 7.5 rupees to eat with the quantities they go in. But that's the rosy part of it. But similarly, algo would have given somebody's algo would have given a sell at 4 or 5 also. Yeah. Okay, जो जाके अटका होगा. So it's not only about one side, it's the other side. And I have seen a lot of this happening regularly. देखो again failed to close above 7.5. Yes. See? But this time again see the trend line test. Yes. Okay, But sir, this time नहीं तोड़ रहा है. This time 15-minute spot chart has given a close below the Sengao P. हमने ये 2 लाइन ज्वाइन करके एक्सटेंड किया. वहां से ही टेस्ट करके वापस मार दिया नीचे. तो वही है ना, इट इज स्ट्रगलिंग. क्या ये दिवाली के पहले का धमाका तो नहीं दे देगा मार्केट कल, ब्लैक फ्राइडे टाइप? See 390 sir, and 15 minute has closed below Senkau B. Yeah, 387, 386. Yeah, but ये सपोर्ट है ना. हाँ, वो 385 देखना है हमें. What happens there? 380 ये सपोर्ट है और यहाँ स्क्वीज है फिर उसका. गौरव, ऑप्शन के प्राइस मेरे चलने बंद हो गए मेरे भी नहीं हिल रहे. नहीं सबके नहीं हिल रहे. ऑप्शन के प्राइस फेयर वैल्यू इज 19,404,406 राइट नाउ एंड स्पॉट इज एट 388. It's 390. तो मेरे में तो 447.90. Yeah, mine is 6.85 right now. 6.55.
नहीं नहीं, मेरा मेरा चलना बंद हो गया है। मेरे में 7.90 के बाद से कोई टिक ही नहीं आ रही है। नहीं, मेरा चलना बंद हो गया है। मेरे पास ये ऑप्शन के प्राइस नहीं आ रहे हैं अभी, तभी दिनेश मैंने सर बोला। प्लीज 19400 पुट लगा दो आप स्क्रीन पे। वही तो है 19400 पुट 6.75 दिखा रहा है। सर मेरे में 7.90 ही आ रहा है, इसलिए बोल रहा था। वही तो, दैट्स रॉन्ग ना। हाँ हाँ। अंडर नहीं, the synthetic value is very skewed because this cannot happen. नहीं 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 सर, यहाँ This पर भी cannot happen. 7.90 दिखा रहा है। Okay. oops oops Yeah, now we have Gaurav, again moved up. saw that Gaurav, saw this Yeah, support yeah, how it works. please. Yes, yes, क्या बोला ना absolutely. मैं, ये ट्रैप है, बहुत गंदा ट्रैप है इधर। Yes, 380, 385. ल्योरिंग ट्रेडर्स टू गेट इनटू इट और फिर मेल्ट कर दो। नॉट जस्ट ल्योरिंग ट्रेडर्स, जिनका ये लेवल्स पे लिया हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, उनके माइंड के संग खेल के नहीं, वापस ले लो, वापस ऊपर जा रहा है वो बोल के। वो एक मीम चलता है ना, पहले मैंने लिया गिर गया, फिर मैंने बेच दिया वापस ऊपर चला गया। Now it's a rocket, like 407. Nice, nicely played, big boys. ये दिस दिस एंटायर पुट इज लाइक दैट, वो रॉकेट छोड़ने का कोशिश किया, रॉकेट डैम पे निकला, उधर ही Ah, खत्म। nice, sir. This is crazy. बट अगर एब्सोल्युटली। 19,400 पे सेटल होता है ना, तो आई वुड से दिस इज चीटिंग। मतलब द रीजन व्हाई आई एम सेइंग सो कि मतलब दे आर फ्यू गाइस हु आर सो सच अ मार्केट मैनिपुलेटर, मतलब दे आर नहीं नहीं जस्ट नहीं गोइंग। राज भाई, आप समझो, इट केम टू अ सपोर्ट ऑफ 380, जो पुट के बायर थे एल्गो सिस्टम, उन्होंने तो मार्केट रेट छोड़ दिया ना माल, और जो सामने से सेलर है वो अपना बिड नहीं लगा के रखे, ऑब्वियसली नीचे का बिड है, उधर काटेगा माल। दिस इज द अदर साइड ऑफ एल्गो दैट यू आर सीइंग आफ्टर 233। कभी कभी ब्रूटल मर्डर कर देता है, एंड मैं अगेन एग्री लाइक आई सर, सेड, बट क्या पुट होता था, के। जैसे आज से हाँ एक महीने पहले आप फिर निफ्टी का सेटलमेंट देखा तो मुझे याद है एग्जैक्ट 750 पे हो रहा है। हाँ मिड कैप निफ्टी एग्जैक्ट 8950 पे हो रहा है। तो राइट। अगर आपका एग्जैक्ट 19400 पे हो रहा है ना, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। What if we close near 350? अरे ना ना बाबा, नहीं I'm नहीं just नहीं kidding. नहीं No, नहीं, I'm just डाउट है। kidding. आई टोल्ड यू ना, ये जो इसका इचिमोकू का ये जो Hmm. लेवल है, ये Hmm. दिस इज अ फाउंड फॉर द Yeah, 30 लोअर टाइम। minutes. दिस Yeah, वाज अ बिग वॉल फॉर द लोअर टाइम फ्रेम। yeah. ओके, सो इट डज नॉट ब्रीच सो इजीली, डजंट गिव अप सो इजीली। Also, I think, sir, we have this hourly Kijun na 387 wala. माय यू नो दैट, यही चीज अगर दिस दिस कैंडल जो अभी बना 245, ये अगर समझिए 145 बना होता या 130 बना होता an hour or so back, it would have given a good call buy signal out here. Hmm. Unfortunately it didn't give a, it gave it too late, एकदम हमारा टाइम रन आउट स्टेज में आके एकदम। Yes. Whew. I think, yeah, 10 more minutes. We'll wind up at 3 only. थोड़ा मस्ती करते हैं. Viewers, no more recommendation coming in. So whatever we are discussing right now, it can be for fun or a normal discussion. You guys can also join us. So if you want to, this will be a 10-minute banter. बहुत हो गया. Unrelated question. Okay, unrelated whether we can trade. No, sir. Jitendra sir, you cannot trade. Cannot trade Sensex options right now. We still don't have that feature. We will have that feature soon. So once that is there, our product team will update. Any intraday trade for tomorrow? No, Vivek sir. Intraday we'll do it tomorrow. So thank you, Sudarshan sir. It means a lot. We always, any call that is given has a rationale. Sometimes it goes right. Sometimes it is doesn't go. So yeah. You on sir? No more recommendation now. So अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं. 9. ये भी स्ट्रगलर है, दिस विल आल्सो स्ट्रगल। 19400 का जो कॉल है, ये भी 15 रुपया डाउटफुल है मुझे। सी द ब्रेकडाउन ना, ये जो लेवल था उसको ब्रीच करके चला गया। 43,600 पुट होल्ड करूं क्या राज भाई?
Balbir sir, we are not discussing anything for that long term because this is a trading related show and our experts are from the derivative team. So, based on derivative view, we cannot make a view on any stock for a year. So, we can't give that view right now. Soil pop up. There is a video done by Dinesh sir with ICICI Direct. You can go in the playlist section. Direct Talks is the section. There we have two parts of Ichimoku covered by Dinesh sir, hosted by me. You can definitely have a look at it. In future, if you guys are too persistent and request Dinesh sir, probably we may have one more session from him if he is okay. Sarvanana, we're talking in English only. Okay. Now there's a huge gap between spot and 19,400 put price. Right, Rajbhai? Still on call? Yes. See, 7 rupees and we are at 387. Dinesh sir, Dinesh sir, Tell me. Dinesh Tell me, sir, sir. Dinesh Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. You don't listen to me. आज हो गया proof in front of 500 अरे viewers. you had a एकदम एकदम नहीं सुना गलती कर दी. अरे क्या सर आप भी मस्ती कर रहा हूँ. No, this गौरव ऑप्शन का प्राइस कितना है? 7 rupees नहीं हिल रहा हो. हाँ, तो बस उसको याद रखो, बाकी प्राइस भूल जाओ. Okay, as you say. What did you do, KG sir? बताइए. If we can help you out, we can definitely help you out. Did you go with a huge quantity by any chance, KG sir? Ukendra sir, gift nifty trading, I don't know whether it is given by any broker. No, you can't do it. It's only in gift and it's only for large corporate. See, Yeah, it is institutional not for traders. retailers. It is not for Quantity. retailers. Farm a quantity. Why you have to register yourself out there for that? KG sir, you can just tell us. We will try our best to help you out because I know you have been a regular viewer and Dinesh sir, Rajbhai, can you see the chat? There's a viewer KG. He हमारे regular viewer है and his profits and all got. Oh, and in which section, sir? In which trade did you lose money, sir? Yes, Isaac, that's true. If anyone is able to predict the market movement properly, he will not be here. He would be printing millions and chilling somewhere on a good island. Okay, okay. KG sir, always keep in check with your quantities for like what usually people should do is like suppose suppose you are trading 200 quantities, so trade 200 quantities for 3 months regularly, and then you can gradually increase it if you're in profit, because if you do 200 today, 400 tomorrow, and then keep on increasing it every trade, you may lose money. There's a high chance of losing money, but for couple of, at least for a quarter or so, if you keep the quantity same, make money there and then gradually increase your quantity, that is a good strategy in options rather than increasing it anytime randomly. So a lot of people get swayed by like, let's take double quantity, triple quantity, make more money, but that's where you lose money. Dixon 500 call option holding since 200 average to Rajbhai, Dixon 5,500 call option view. Rajbhai. हाँ, मैं वही देख रहा था. हाँ. सर, आई एम नॉट श्योर आपने कहाँ लिया है, बट I'll tell you उन्होंने कहाँ लिया है. उन्होंने लिया है 200 रुपए पे, एवरेज कर दिया है 103 पे. हे भगवान.
अब मैं क्या बोलूं, जिस दिन उन्होंने 103 का एवरेज किया था उसके बाद लो 52 मारा था नहीं, और वो आज एवरेज कर 70। करके 103 के 200 पे बाय था। एवरेज अब हाँ। उनका 103 हो गया। अच्छा सर, 60 मतलब बेस्ट केस मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये स्टॉक ऐसा है कि एक दिन में 7-8% भी चल जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट strongly advise you not to hold this option below 60. या yes, KG sir. Amrit Lamba, your suggestions view to play daily expiry with hedge November future short and say today's so daily expiry is very perfect, KG sir. I think that's the best thing you're doing. केजी सर, मैं मतलब आई एम Also, एक्सट्रीमली सॉरी। Rajbhai, one second. Rajbhai, one second. Sorry. Viewers who are from Pune here, can we just get a yes from Pune? Pune viewers who are watching us right now, and is somebody from Pune? Can you please put a yes here? There is something. Then there is a surprise lined up. Pune, Kolkata, or Lucknow. These three cities. Anybody from these three cities, please put a yes. Ishwar Kumar, you're from which city? Okay, great. So you may get a chance to meet Rajbhai in Pune on 2nd of December. We will not reveal the entire plan, but Rajbhai will be taking a session in Pune this on 2nd of December. So Pune guys, you guys can if you guys want to meet him, want to attend the session, you guys can come to that place. There will be a 3 hour session of purely for option traders, for options and all those. And Kolkata we'll have Dinesh sir there in Kolkata who will be there with us. So Kolkata guys, Lucknow guys, Pune guys, these are the three cities where we are planning to come in December. And we are starting with Pune, and Pune would be somewhere near 2nd of December. Dinesh sir? Yes, boss. Tell Mumbai, me. yes, Mohan sir, Mumbai we'll definitely have, but we are starting from Pune. So Pune is it? Pune is from 2nd of December. Then Kolkata hero, Mr. Dinesh Nagpal will be there with us. So मैं other चिट्ठी cities we टाइटिंग will, कर दूं. yes, other cities we will be definitely coming. We'll be definitely coming. We will roll out the plan soon. Yes, Jaipur is also in plan, sir. We have plans to come to Bangalore, Jaipur, Chandigarh, Delhi, Chennai, Hyderabad, Ludhiana, Jalandhar, and all those cities. Ahmedabad as well. Ahmedabad, Surat as well. So yes, we are planning to do a pan India tour, and it will be with Mr. Rajdeepak Singh and Dinesh Nagpal both. Pune, we'll tell you the venue and everything. We'll put the details out on our Twitter handle and also on our Telegram channel. So please stay tuned for more details. Yes, Mohan sir, Hyderabad is also in plan, sir. Vikram sir, Lucknow is definitely next month for sure. Webinar we are having, sir, but we this time we are planning to do a ground tour where you guys can meet us one to one physically. That would be a much better idea. And we want all the option traders to be there so that we can actually do great to learn from Rajbhai and his experience and also from Dinesh sir's experience. So this tour would be purely for option traders, people who want to trade option, want to learn options properly, and want to avoid mistakes. Nagendra Swami sir, we have webinars. Webinars are going on, but this time it will be offline as well. So if you guys are excited, you guys can put a thumbs up. Dinesh sir, 3 to हाँ 2. जी. पर हाँ, अब तो टाइम खत्म हो गया ना यार. लास्ट 10 मिनट अब तो सब स्क्वायर ऑफ वाले आ गए ना. अगले uh, But look when at and when this. Four, UJCB sir will update 400 us. put, 400 put running at $8. Spot running $18 below 400. माना क्या हो रहा है? Okay. Okay. Yes, Nagendra Swami, the Hyderabad also we'll have that. Hyderabad also we'll do that.
Yes, it will be the plan is to have an offline one-to-one session with everybody so that you guys meet our experts physically and there can be a good camaraderie between ICICI experts and our viewers and also our clients. So this is the plan, and this is purely educational. We will be teaching, we'll be guiding people what mistakes one should avoid doing it in the market. So it will be a very great session for us, and hopefully you guys are also there. UJCB sir, Gurugram is also in plan. Delhi, Gurgaon, Chandigarh. That is another place. So yes, so I think it's 3 o'clock. We can end this session. Stay tuned for more, updates on our city tour, which starts in December, and the first city is Pune. Okay, thank you, Rajbhai. Thank you, Dinesh sir. Thank Thank you, you for being everyone. part. Bye bye. And happy Thank you Diwali so much. to everyone. Happy Diwali, yeah. Happy Diwali, Shubh Dhanteras. Happy Diwali, everybody. Bye bye. Yeah, thank you. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.